और दूसरे वो दूसरा कुछ ढूंढेंगे करने के। My Gurudev used to say this is for serious students. मेरे गुरुदेव कहा करते थे ये गंभीर लोगों के लिए, or at least those who want to become serious. कम से कम उन लोगों के लिए जो गंभीर होना चाहते हैं। So we have a new sound system. हमने नया साउंड सिस्टम लगाया है। Hare Krishna. Okay, let's start. चलिए शुरू करते हैं। Srila Prabhupada ki jai. Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki jai. Srila Bonita ki jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki jai. Premanande. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya
परिव्राज की चाय श्री श्रीमान Govinda Swami Shila Gurudev ki Jai.
Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Shishimad, His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Shishimad, Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Vamsiko Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Srimati Radharani Ki Shri Shri Gaunitai Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis Ki Shri Shri Radha Gopinath Ki Shri Shri Radha Gopal Ju Ki Shri Shri Radha Madhava Ki Premanam Sankirtan Jagya Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Transcendental Book Distribution Ki Samaveda Bhakta Vrinda Ki Gaura Premanande all glories to the simple devotees. Hare Krishna. All glories to the simple devotees. Hare Krishna. All glories to the simple devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru, Shri Guru. So before we recite Srimad Bhagavatam, we'll offer our respectful obeisances, some prayers to Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम चर्चा करने से पहले हम श्रीमद् भागवतम कुछ प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रणाम अर्पण करते हैं. Just like to understand Krishna requires so much mercy, also to understand Krishna in the form of Srimad Bhagavatam requires a lot of mercy to understand properly. तो कृष्ण को जिस तरह समझने के लिए हमें बहुत कृपा की ज़रूरत है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम समझने के लिए भी हमें बहुत कृपा की आवश्यकता है. In order that it may enter into our ear, ताकि हमारे कानों में प्रवेश कर सके. Bypass the false ego, the mental speculation, the pride, the arrogance, all of that stuff, and reach the soul. That requires a lot of purification, a lot of mercy. तो ये हमारे मिथ्या अहंकार को पार करते हुए, मनोधर्म को पार करते हुए, सारे भौतिक कल्मश को पार करते हुए हमारे हृदय तक, आत्मा तक पहुंच सके, क्योंकि इसके लिए बहुत शुद्धिकरण और बहुत कृपा की ज़रूरत है. You ready? Yes. Are you ready to get mercy? आप तैयार हैं कृपा पाने के लिए? Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayam udiraye Vede ramayane chaiva Purane bharate tata Adavante chamadye cha Hari Sarvatra Giyate Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yad Kripa Tamaham Bande Shri Gurum Dinatarane Paramananda Madhavam. You can sing with me if you can. आप मेरे साथ गा सकते हैं अगर आप कर सकते हैं. That will help me. ये मेरी मदद करेगा. Paramananda he Madhava Pandunga Luchi Makaranda Se Makaranda Anakari Anande Bolo Hari 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 Name Bandavela Hari Hari Chakarola Se Chakarolanka Payare
Sarvotra Paramo Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivatam Tapatrayan Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Pareshwara Sadya Hridyavarujyate Chakriti Susushistachanat Nigama Kapatra Kalitam Talam Shakamukalam Mrita Dravya Samyutam Vipata Bhagavatam Rasam Malayam Muhur Ahorasika Bhuvibhavukaha Anatto Pasamam Sakshat Bhakti Yoga Madhoksaje Lokasya Janato Vidvam Shakri Satpat Samhitam Yasham Bhai Shriyamanayam Krishna Paramapurushe Bhakti Upadyate Pumsa Shokamoha Bhayapaha Srimad Bhagavatam Puranam Mamalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsam Ekam Mamalam Jnanam Param Giyate Tatra Jnana Vairagya Bhakti Sahitam Nashkamyam Vishritam Tatshinvan Supatan Tucharana Paro Bhaktyarumachayanaha Ato Yam Brahma Sutranam Bharatata Vanirnaya Gayatri Bhaksharuposo Vedata Paribrimita Sava Vedatihasanam Sadam Sadam Samudyatam Sava Vedanta Saram Hi Srimad Bhagavatam Vishyate Tadra Samrita Chittasya Nanyatra Sadhati Kvachit Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhagavata Tate Veda Shasoite Parama Mahatma Chari Veda Upanishade Jata Kicho Haya Tarata Lanavyasa Karila Sanchaya Jesu Chayeyo Vishaya Vachana Bhagavate Sevu Shloke Nirvandana Jivera Nistara Lagi Sutra Kaila Vyasa Mayavadi Pashushunile Haya Sarvanasha Yaha Bhagavata Pada Vaishnavira Stane Ekanta Shrayakara Chaitanya Charane Bhagavata Jena Mane Seyavana Sama Tara Shasta Hachirane Jane Prabhu Yama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radharaj Srimad Bhagavatam ki jai. So it's mentioned here in these prayers तो इन about the प्रार्थनाओं glories of the Srimad Bhagavatam, इन प्रार्थनाओं में श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया गया है and it's explained that the incarnation of Krishna coming in form of Srimad Bhagavatam. और कृष्ण ऐसा बताया जाता है कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में अवतार लेते हैं So Srimad Bhagavatam is non-different from Krishna, श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है and it only speaks about prem bhakti, Shuddha bhakti, और ये सिर्फ शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति के बारे में बात करता है no Kaitava Dhamma, only Sanatan Dhamma, only bhakti. कोई कर्तव्य धर्म नहीं सिर्फ सनातन धर्म भक्ति
So it rejects all other religious activities which have some materialistic motivation, gross or subtle motivation. और तो उन सारे धर्मों को अस्वीकार कर देता है जिसमें कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक उद्देश्य हैं। That's propounding the highest truth. और सबसे उच्चतम सत्य के बारे में बात करता है। And only those who are not envious persons, who are fully pure in the heart, only can they understand it. और जो पूरी तरह से बिना किसी ईर्ष्या के हैं और पूरी तरह से शुद्ध हृदय वाले हैं, वही श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हैं। That's why to understand it we need mercy. Otherwise, how will have the purity and freedom from this enviousness in order to be able to understand it. इसलिए हमें कृपा की आवश्यकता है, वरना हम कैसे वो शुद्धिकरण प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस द्वेष से मुक्त हो सकते हैं और आज़ादी से वो आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम सुन सकें। When you understand the absolute truth, that is the ultimate reality. परम सत्य जो है ये सबसे उच्चतम सच्चाई है। When you understand the highest truth, then you can see everything else and what is inferior about that. What is the illusion that is there. अगर आप परम सत्य जानते हैं तो आप वो सब कुछ देख पाएंगे कि क्या सत्य है और क्या मोह है। This truth, as it explains, it uproots all the threefold miseries. ये सत्य जो है तीन भौतिक तापों से मुक्त कर देता है। These are the benefits of hearing, getting mercy of Srimad Bhagavatam. ये फायदे हैं श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का और श्रीमद् भागवतम के से कृपा प्राप्त करने का। It says, as soon as one attentively and submissively hears the message of the Bhagavatam. ऐसा बताया जाता है कोई अगर जैसे ही सावधानी पूर्वक श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है, Attentively, we really want to understand it. At the same time, we're open, submissive enough to receive it. अगर वो ध्यान पूर्वक सुनता है और साथ में खुले मन और हृदय से समझना चाहता है, जानना चाहता है। And if that happens, then all the ignorance, all of this anarthas, unwanted things will be destroyed from the heart. और अगर ऐसा होगा तो जितने अनर्थ हैं, जितना अज्ञान है, हमारे हृदय से दूर हो जाएगा। And the Supreme Lord will ultimately be established within the heart. और भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। My Gurudev used to say, you know, the spiritual master, if he asks Krishna, please come sit in the heart of someone, Krishna will not say no. मेरे गुरुदेव बताते हैं अगर शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से कहें कि अगर किसी के हृदय में जाके विराजमान हो तो भगवान उनको ना नहीं कह सकते कभी। But if our heart is so filthy, so dirty, why will the spiritual master, why will he ask Krishna, who he has love for, to come and sit in our filthy heart? लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वो क्यों कृष्ण जिनसे वो इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं उनको हमारे गंदे हृदय में विराजमान होने को कहेंगे। So we have to clean it up. तो हमें इसकी सफाई करनी होगी। Prabhupada says the process of Krishna consciousness, process of purification. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया So है। all the material desires, sinful attachments, all of this sinful reactions, all of this thing has to get burnt out. ये भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति, पाप कर्म के फल, इन सारी चीज़ों से हमें मुक्त होना होगा। And with mercy of Srimad Bhagavatam, Guru and Krishna's mercy, then this big false ego which is covering the soul will shrink. और गुरु कृष्ण की कृपा से ये जो बड़ा मिथ्या अहंकार है ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। The false ego is creating all of the clouds, like clouds, thick dark clouds. ये मिथ्या अहंकार जो है मोटे मोटे काले बादल घेर रहा है हमारे चारों तरफ। So we cannot see the sunlight so nicely, so easily. तो इसलिए हम सूर्य की रोशनी बहुत आसानी से देख नहीं पा रहे हैं। So first process of purification is most required. तो सबसे पहला प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा आवश्यक है। Krishna is purest of the pure. कृष्णा शुद्धतम में भी शुद्ध है। If we're speaking about Krishna in Srimad Bhagavatam, it means we're associating with the purest of the pure. अगर हम कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हम सबसे शुद्धतम में विशुद्ध कृष्णा के साथ संग कर रहे हैं। If we do it rightly, with the right mood, right motivation, get the mercy, then that will be the result. अगर हम सही मनोभाव से करेंगे, सही उद्देश्य से करेंगे, तो ये हमें फल प्राप्त होगा उससे। And it explains all of the ignorance, all the suffering will be destroyed. और ऐसा बताया जाता है सारे दुख, सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। All of our lamentation हमारे शोक and moroseness, depression, all of this thing will go. निराशा, हताशा ये सब चली जाएगी। All of the fear and anxiety, uncertainty that we have in our life, all of that will also be eliminated by mercy of Srimad Bhagavatam. सारी भय, सारी चिंताएं और सभी तरह की समस्याएं हमारे जीवन से मुक्त हो जाएंगी अगर हम श्रीमद् भागवतम का कृपा प्राप्त कर We'll पाएं। automatically get rid of this karmic materialistic activity.
अपने आप ही स्वतः हम इस कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे and develop in our transcendental knowledge and understanding. और दिव्य ज्ञान और समझ विकसित कर पाएंगे. We'll automatically become renounced. हम स्वयं ही त्याग की भावना आएगी. And ultimately we'll develop in our devotion. और अंततः हम भक्ति प्राप्त कर पाएंगे. So this is it says anyone who seriously, sincerely tries to approach Srimad Bhagavatam in that way, कहते हैं अगर कोई श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से ईमानदारी से इस तरह से जाने का प्रयास करता है श्रीमद् भागवतम के पास, who properly tries to hear and सही- chants it in a mood of devotion, सही तरीके से गंभीरता से और ईमानदारी से श्रीमद् भागवतम चर्चा करने का प्रयास करता है, then the end result one will become completely liberated. अंतफल ये होगा कोई पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा. So today there's a lot of discussion on the Srimad Bhagavatam. We can discuss further in the text that we're going to talk about today. तो आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के, हम उस पे इस बातों पे और भी ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे. But the Bhagavatam is topmost Vedic literature. श्रीमद् भागवतम सबसे उच्चतम वैदिक शास्त्र है. It says, I think Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, if all the books in the library of the world were burnt to ashes, it wouldn't matter as long as there was Srimad Bhagavatam was still there. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अगर पुस्तकालय के सारी किताबें भी जलकर राख हो जाएं, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम है मौजूद, तब भी कुछ भी हमें All these कुछ खोए other नहीं. books, knowledge, so-called knowledge, information, it's all just speculation. ये सारी किताबें, सारा ज्ञान, ये बस मनोधर्म है, मनगढ़ंत चीज़ें हैं. It's all faulty. ये सब It's all त्रुटिपूर्ण है. materialistically conceived and materialistically motivated towards that goal. और ये भौतिक उद्देश्य और भौतिक गोलों के भौतिक लक्ष्यों के पीछे लिखा गया है इनको. And it will just contaminate us and confuse us. और ये हमें दूषित करेगा और हमें और भ्रमित करेगा. So Srimad Bhagavatam is meant to purify us and to explain what is highest truth. श्रीमद् भागवतम बना है हमें शुद्ध करने के लिए और हमें बताने के लिए कि परम सत्य क्या है. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. So now we'll turn to the text. तो हम श्लोक पर आएंगे. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading in Srimad Bhagavatam in the first canto, chapter 2. तो प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय से हम पढ़ रहे हैं. This is Divinity and Divine Service, name of the chapter. दिव्य और दिव्यमय सेवा. And we'll read text number 3 today. और श्लोक नंबर 3 हम पढ़ेंगे. Please repeat. कृपया दोहराइए. Yaha Sva Anubhavam Akila Shruti Saram Ekam Adhyatma Deepam Atiti Rishatam Tama Andham Samsarinam Karunaya Aha Purana Guyam Tam Vyasa Shunam Upayami Gurum Muninam. What is that? Is it from the wind? Maybe someone's phone has interference. Like if you have phones, you can keep it away from the tables. Everyone shut off their phone. We don't want any spies in here. सभी अपना फ़ोन बंद कर दीजिए. हमें कोई जासूस यहाँ नहीं चाहिए. This is only meant for those who are pure-hearted, non-envious,
ये उन लोगों के लिए जो पूरे शुद्ध हृदय वाले हैं, बिना किसी ईर्ष्या के हैं। And what is our crime? We're speaking the highest truth to purify our existence and get mercy of Guru and Krishna. What is the crime here? और हमारा क्या अपराध है? हम परम सत्य के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, अपने आप को शुद्ध करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। I think we've done much worse in our life, don't you think? We have done much worse in our life. हमने जीवन में और बहुत गलत काम किए हैं। This, you have to point it like that way. It's on me, you know. I cannot deal with the AC. AC से मैं बहुत ज़्यादा डील नहीं कर सकता। So the Sanskrit is ya svanubhavam akila shruti saram ekam adhyatma dipam atiti vishatam tamon ridam samsarinam karunayaha purana guyam tam vyasa shunam upayami gurum muninam. Please repeat. कृपया दोहराइए। Yaha, he who, वो sva anubhavam, self assimilated, स्वयं एकत्र करने वाला, akila, all around, चारों तरफ, shruti, the Vedas, वेद, saram, cream, क्रीम, ekam. There's no Hindi word for cream? Yes. Huh? Alive. He speaks Hindi, doesn't it? Ekam, the only one. एकमात्र, Adhyatma, transcendental, दिव्य, Deepam, torchlight, प्रकाश, atitrishatam, desiring to overcome, आगे जाने की इच्छा करने, tama andham, deeply dark material existence, गहरे भौतिक अस्तित्व से, samsarinam, of the materialistic man, भौतिक व्यक्ति के, karunaya, out of causeless mercy, अपनी अहेतु की कृपा से, aha, said, कहा, Purana, supplement to the Vedas, वेदों के Guyam, very confidential, बहुत रहस्यमयी, Tam, unto him, उनमें Vyas Shunam, the son of Vyasadeva, व्यासदेव के पुत्र, Upayami, let me offer my obeisances, मुझे अपना प्रणाम अर्पण करने दीजिए, Gurum, the spiritual master, आध्यात्मिक गुरु, Muninam, of the great sages. महान ऋषियों के, Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। Sutta Goswami is offering his prayers. सूत गोस्वामी अपनी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, And he said, let me offer my most respectful obeisances unto him, Srila Shukadeva. और वो कह रहे हैं मुझे अपना सबसे आदरपूर्वक नमस्कार करने दीजिए सुखदेव गोस्वामी को, who is the spiritual master of all of the most thoughtful sages, जो आध्यात्मिक गुरु हैं सारे विचारात्मक ऋषियों के, the most exalted son of Srila Vyasadeva, और श्री व्यासदेव के सबसे उत्तम पुत्र, who out of his great compassion for those gross materialists, जो सारे जो कर्मी लोगों के लिए उन्होंने अपनी कृपा से
who struggle so hard to cross over the darkest regions of the material existence. जो इस भौतिक अंधकार से बाहर आने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, He spoke this most confidential supplement to the cream of the Vedic knowledge. उन्होंने ये सबसे महत्वपूर्ण मलाई जो है वेदों का लोगों के सामने रखा After he personally heard it and assimilated it जब उन्होंने स्वयं उसको सुना और उसको एकत्र किया by his own personal experience. स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव से. So it says, let me offer my most respectful obeisances unto him, Shukadev, the spiritual master of all the thoughtful sages, the most exalted son of Srila Vyasadeva, who out of his great compassion for those gross materialists who struggle so hard to cross over the darkest regions of the material existence, he spoke this most confidential supplement to the cream of the Vedic knowledge after he personally heard and then assimilated it by his own personal experience. तो श्री सूत गोस्वामी अपने आदरपूर्वक नमस्कार सुखदेव गोस्वामी जी को कर रहे हैं, जो कि सारे ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक गुरु हैं, व्यासदेव के सबसे उत्तम पुत्र हैं, और उन लोग जो पूरी तरह भौतिक अंधकार में संघर्ष कर रहे हैं इस जगत से बाहर आने के लिए, उन पे करुणा दिखाने के लिए उन्होंने सबसे पहले वैदिक ये जो सबसे उत्तम वैदिक शास्त्र है और उस जो मलाई है उसको लोगों को कहा ताकि वो इस भौतिक अंधकार से मुक्त हो सकें. उन्होंने स्वयं इसको पहले श्रवण किया और एकत्र किया. Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य. In this prayer, Srila Sutta Goswami practically summarizes the complete introduction of the Srimad Bhagavatam. इस श्लोक में जो है सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का भूमिका बहुत अच्छे से बताया है. Srimad Bhagavatam is the natural supplementary commentary on the Vedanta Sutras. श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का स्वाभाविक व्याख्या है. So the Vedanta Sutras, or sometimes called the Brahma Sutras, they were compiled by Srila Vyasadeva. तो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र जो है ये व्यासदेव के द्वारा लिखा गया, with a view to presenting just the cream of the Vedic knowledge. ताकि जो वैदिक ज्ञान के सबसे मलाई को प्रस्तुत किया जाए. And Srimad Bhagavatam is the natural commentary on this cream. और श्रीमद् भागवतम जो है प्राकृतिक व्याख्या है इस मलाई का. Srila Sukadeva Goswami was a thoroughly realized master of the Vedanta Sutra. श्री सूत गोस्वामी जो हैं वेदांत सूत्र के एक आचार्य हैं. And consequently, he also personally realized this commentary of the Srimad Bhagavatam. और उन्होंने भी इस श्रीमद् भागवतम के व्याख्या का साक्षात्कार स्वयं किया है. And just to show his boundless mercy upon bewildered materialistic men, और अपना कृपा देने के लिए जो ये भौतिक व्यक्तियों को who want to cross over completely over nescience, जो अज्ञान के पार जाना चाहते हैं, he recited for the first time this most confidential knowledge. उन्होंने सबसे पहली बार ये सबसे रहस्यमय ज्ञान लोगों को बांटा. Srila Prabhupada said there is no point in arguing that a materialistic man can be happy. इस बात पर कोई बहस नहीं की जा सकती कि कोई भौतिक व्यक्ति कभी भी जीवन में खुश हो सकता है. No materialistic creature, be he the great Brahma or even an insignificant ant, can be happy. कोई भी भौतिक जीव चाहे वो सबसे बड़ा ब्रह्मा हो या फिर एक चींटी हो, कभी भी खुश नहीं हो सकता. Everyone tries to make a permanent plan for happiness. सभी कोई अपना योजना बना रहे हैं अस्थायी सुख पाने के लिए. But everyone is ultimately baffled by and thus suffering under the stringent laws of the material nature. और अंत में सभी पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं और दुख भोगते हैं प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर. Therefore, the materialistic world is called the darkest region of God's creation. इसलिए भौतिक जगत को सबसे अंधकार में जगह कहा जाता है भगवान के सृष्टि में. This is prison house. ये कारागार है. Yet the unhappy materialist can get out of it. फिर लेकिन ये जो दुख में भौतिक लोग हैं ये यहाँ से बाहर निकल सकते हैं. If they would just simply and sincerely desire to want to get out of it. अगर वो सरलता से इच्छा करते हैं यहाँ से बाहर आने की. Unfortunately, they are so foolish दुर्भाग्य से वो इतने मूर्ख हैं that they do not want at all to escape.
वो यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। Therefore, they are compared to the camel, इसलिए उनको ऊँट के साथ तुलना की गई है, who relishes eating the thorny twigs, जो स्वाद लेता है कंटीले टहनियों को खाने में, because he likes the taste of the twigs, which are cutting into his tongue and making blood. उनको बहुत स्वाद आता है कटीले टहनी को खाने में, क्योंकि वो कटीले टहनी उसकी जीभ को काट कर रक्त बहाते हैं और वो अपने रक्त का स्वाद लेता है। He does not realize that it is his own blood and that his tongue is being cut by these thorns. वो समझ नहीं पाता ये उसका खुद का ही रक्त है और उसका स्वाद लेते रहता है जो उसके कटीले टहनियों ने उसकी जीभ को काटा है। So similarly to the materialist, his own blood is as sweet as honey. उसी तरह भौतिक लोगों के लिए खुद का ही खून शहद के जैसा मधुर लगता है। And although he is always harassed by his own material creations, और यद्यपि वो हमेशा हताश रहता है अपने ही भौतिक निर्माण से, still he does not wish to escape. फिर भी वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। Such materialists are called karmis. ऐसे भौतिक लोगों को कर्मी कहा जाता है। And out of hundreds of thousands of karmis, only a few may feel tired of this material engagement. और उन हजारों लाखों कर्मियों में कोई एक है जो ये समझ पाता है और पूरी तरह थक जाता है इस भौतिक बंधन से, And then desire to get out of this perplexity and confusion. और इच्छा करता है इस परिस्थिति से बाहर आने की। Those who are fed up, tired, exhausted, they want to get out of it. Such persons, they're intelligent, they're called jnanis. जो पूरी तरह थक के चूर हो चुके हैं यहाँ पे, वो यहाँ से बाहर जाने की इच्छा करते हैं, उनको बुद्धिमान कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। So the Vedanta Sutra is directed to such jnanis. तो वेदांत सूत्र उन ज्ञानियों के लिए बताया गया है। But Srila Vyasadeva, who compiled all of the Vedic literatures, all of the Vedas, लेकिन श्रील व्यासदेव जिन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की, because he was Shakti Avesh avatar, incarnation of the Supreme Lord, क्योंकि वो सत्यावेश अवतार हैं, भगवान के सत्यावेश अवतार में माने जाते हैं, he could foresee the misuse of the Vedanta Sutra by unscrupulous men. वो देख पा रहे थे वेदांत सूत्र का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं लोग। He could see how they could twist it. वो देख पा रहे थे कैसे लोग इसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। Because he knew as Kali Yuga is coming, these people will be so crooked that they'll just take this and they'll just twist it. It's so simple, but because they're crooked, they'll try to take it in an opposite way. तो क्योंकि कलयुग आ रहा था, वो देख पा रहे थे कलयुग के लोग बहुत कुटिल हैं, वो कुछ चीज़ों को उठाकर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और उल्टा प्रस्तुत करेंगे। वो इन सब चीज़ों को देख पा रहे थे लोग इस तरह कुटिल हैं। So therefore he came and made his own commentary of what does it actually mean. तो इसलिए उन्होंने आकर स्वयं व्याख्या किया कि असल में इसका मतलब क्या है। Therefore he personally supplemented the Vedanta Sutra with the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam. इसीलिए उन्होंने स्वयं आकर श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के स्वाभाविक व्याख्या को लिखा। So it is clearly said here that this Bhagavatam is the original commentary on the Brahma Sutras, तो Vedanta Sutra. यहाँ साफ साफ बताया गया है श्रीमद् भागवतम ही मूल व्याख्या है वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र का। Srila Vyasadeva also personally instructed the Bhagavatam to his own son, Srila Shukadeva Goswami. श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भी श्रीमद् भागवतम के निर्देश बताए। And at that time, Shukadeva Goswami was already at liberated stage of transcendence, of Brahmanandi. और उस वक्त सुखदेव गोस्वामी स्वयं ब्रह्मानंद के स्तर पर थे। So Srila Shukadeva, he realized it by hearing from his father, Srila Vyasadeva. तो सुखदेव गोस्वामी ने इसको साक्षात्कार किया अपने पिता व्यासदेव के माध्यम से श्रवण करके। And after hearing it and assimilating it, he then explained it to others. तो श्रवण करके एकत्र करने के बाद फिर उन्होंने इसको अन्य लोगों को व्याख्या किया। That's the definition of this Shrota Parampara. ये श्रोत परंपरा का अर्थ है। By the mercy of Srila Shukadeva, the Bhagavad Vedanta Sutra is available for all those sincere souls who want to get out of material existence. तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा से आज ये श्रीमद् भागवतम उपलब्ध हो पाया है उन लोगों के लिए जो एकनिष्ठ ईमानदारी से इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं। It's not meant for everyone. ये सभी के लिए नहीं है।
because most people are not interested. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोई रुचि नहीं है। But those sincere souls who want to get out, it's meant for them, it's available for them. लेकिन वो ईमानदार लोग जो इनसे बाहर आना चाहते हैं वो ये उनके लिए है। So Srimad Bhagavatam is the one unrivaled, no one can touch it, topmost commentary on that Vedanta Sutra. तो श्रीमद् भागवतम जो है सबसे उच्चतम व्याख्या है श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का। Srimad Shankaracharya, intentionally, he did not touch it. श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर श्रीमद् भागवतम कभी छुआ नहीं, Because he knew that the natural commentary would be difficult, impossible for him to surpass that. क्योंकि उनको पता था कि जो स्वाभाविक व्याख्या है इसको बहुत मुश्किल होगा इससे पारा पाना। He wrote his Shariraka Bhashya, उन्होंने अपना शारीरिक भाष्य लिखा and his so-called followers, they depreciated or they didn't respect properly the Bhagavatam, and they said, oh, it's just some new presentation. और उनके जो नाम मात्र के अनुयायी हैं उन्होंने इसकी सराहना नहीं की श्रीमद् भागवतम की, और उन्होंने कहा ये कुछ नया बनाया गया चीज़ है। One should not be misled by such propaganda directed against the Bhagavatam by these Mayavadi school. तो किसी को इन मायावादी विद्यालय के द्वारा श्रीमद् भागवतम की जो असराहना की गई है इसके बारे में ये श्रवण नहीं करना चाहिए। From this introductory shloka, the beginning student should know that the Srimad Bhagavatam is the only transcendental literature तो इन शुरुआती श्लोकों से किसी को समझना चाहिए कि यही एकमात्र श्रीमद् भागवतम एक दिव्य ग्रंथ है, meant for those who are Paramahamsas, उन लोगों के लिए है जो परमहंस हैं, and completely freed from the material disease called malice. और ये पूरी तरह मुक्त है इस भौतिक रोग से जिसको It's like hatred due to enviousness. मतलब नफरत किसी चीज़ से करना, द्वेष किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा करना। So if you have this enviousness towards Krishna, this hatred for Krishna, Krishna's devotees, they could not come close to it. They could not understand it. तो जिनको कृष्णा से नफरत है, कृष्णा से ईर्ष्या करते हैं, कृष्णा के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वो इसके नज़दीक कभी नहीं आ सकते। This is meant for and understood by Paramahamsas who are completely free from this material disease. ये उन परमहंसों के लिए बना है, वही इनको समझ सकते हैं जो इस भौतिक रोग जो ईर्ष्या है उससे मुक्त हैं। The Mayavadis are always envious of the personality of Godhead, मायावादी हमेशा भगवान से ईर्ष्या करते हैं, despite Sripad Shankaracharya's admission that Narayana, his supreme personality of Godhead, is above the material creation. यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अपने लक्ष्य मिशन में बताया था कि नारायण जो है भौतिक गुणों से ऊपर है, सबसे उच्चतम है। So even their own guru is saying that Narayana is supreme personality of Godhead above material creation, and they're so envious, still they cannot accept it. यहाँ तक कि उनके गुरु ने भी कहा है नारायण सबसे उच्चतम है, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हैं, तब भी वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते और तब भी वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। Therefore, they have no access to the Bhagavatam. इसीलिए उनको कोई अधिकार नहीं है श्रीमद् भागवतम में। But those who are really anxious to get out of the suffering of the material existence, लेकिन वो जो बहुत उत्सुक हैं इस भौतिक दुखमय परिस्थिति से बाहर आने के लिए, they may take complete shelter of the Srimad Bhagavatam, वो पूर्ण आश्रय ले सकते हैं श्रीमद् भागवतम का, because it is uttered by the liberated Srila Shukadeva Goswami for that purpose. क्योंकि ये पूर्ण रूप से मुक्त, नित्य मुक्त शुकदेव गोस्वामी के द्वारा व्याख्या किया गया है उन्हीं लोगों के लिए। It is the transcendental torchlight ये दिव्य प्रकाश है by which one can see perfectly the transcendental absolute truth, जिसके माध्यम से कोई पूर्ण रूप से देख सकता है परम सत्य को, realized as Brahman, Paramatma and Bhagavan, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में उनका साक्षात्कार कर सकता है, and thus solve all of the problems and miseries of the material life. और इसीलिए वो अपने जीवन के और अपने भौतिक जीवन के सारे समस्याओं का, दुखों का समाधान कर सकता है। Om Jnanatamannandasya Gananjana Shalakaya Chakshomritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Shri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again, translation. अनुवाद फिर से।
Sutta Goswami says, let me offer my most respectful obeisances unto him, Shukadev, the spiritual master of all of the thoughtful, most thoughtful sages. शिला सूत गोस्वामी अपना आदरपूर्वक नमस्कार अर्पण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, जो सभी विचारात्मक ऋषि मुनियों, महान ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक गुरु हैं। He's the most exalted son of Srila Vyasadeva, शिला व्यासदेव के सबसे उत्तम पुत्र हैं, who out of his great compassion for those gross materialists who struggle so hard to cross over the darkest regions of the material existence, जो उन कर्मियों को करुणा देने के लिए जो इस भौतिक जगत में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं अंधकार से बाहर आने के लिए, he spoke this most confidential supplement to the cream of the Vedic knowledge. उन्होंने ये सबसे रहस्यमयी मलाई है वैदिक ग्रंथों का लोगों को व्याख्या किया। After he personally heard and then assimilated it जब उन्होंने स्वयं पहले इसको श्रवण किया और एकत्र किया by his own personal experience. स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव से। So Srila Prabhupada is explaining that this prayer given by Srila Sutta Goswami, this is practically summarizing the complete introduction of the Srimad Bhagavatam. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का असल में श्रीमद् भागवतम के सार को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। And how and why Srila Vyasadeva decided to give the natural commentary on Vedanta Sutra, because he wanted to make crystal clear so that these people will not manipulate it for some other purpose. हम जान सकते हैं क्यों और कैसे श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, क्योंकि वो जानते थे जो लोग हैं उसको अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। So because he knows the corruptness and the crookedness of these individuals and how they'll twist everything, then he makes it crystal clear in an authoritative way so that they cannot so easily bewilder those who might be interested to understand about absolute truth. तो इसीलिए उन्होंने जब इसकी रचना की तो जो भ्रष्ट लोग हैं, कुटिल लोग हैं, जो इसको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, तो सामान्य लोग इससे न भटके और इससे भ्रमित न हों, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की ताकि वो जो गंभीर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इसको प्राप्त कर सकें। Now Srila Prabhupada makes a very interesting point. He said there's no point in arguing that a materialistic man can be happy. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यहाँ पर इस बहस के कोई सवाल नहीं उठता कि कोई भौतिक व्यक्ति कभी भी जीवन में खुश हो सकता है। If we're not intelligent and conscious and honest enough to realize that there's no real peace and happiness in this world, अगर हमारी चेतना इतनी नहीं है, हमारा इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ पाएं कि इस भौतिक जगत में असल में कोई सुख नहीं है, then there's no, it's not worth it to argue with a man who thinks he's happy. कोई फायदा नहीं है उस व्यक्ति से बहस करने का जो ये सोचता है कि हाँ वो खुश रह सकता है। Like hogs and dogs, camels and asses, Prabhupada says, they're thinking themselves very happy. प्रभुपाद कहते हैं ये सुअर, कुत्ते, ऊँट ये सोचते हैं वो यहाँ भौतिक जगत में खुश हैं। So as long, and that's what Maya does. She makes you think, oh, in ignorance, yes, you're very happy. और माया यही करती है, अज्ञान में हम सोचते हैं हम बहुत खुश हैं। So even they're suffering like anything, still they think, I'm happy. यहाँ तक कि वो पूरी तरह दुख भोग रहे हैं, फिर भी वो कहेंगे मैं खुश हूँ। So it says that the human form of life is meant to realize that we're in a suffering condition. जैसे कहा जाता है मनुष्य जीवन मिला है इस बात का साक्षात्कार करने के लिए कि हम अपने जीवन में दुखों का भोग कर रहे हैं। Because Krishna says he had made this world to Kalyam Shasvatam to be temporary and miserable. क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैंने ये जगत बनाया है दुखालम अशाश्वतम, यहाँ हमेशा दुख और कष्ट मिलेगा। My Gurudev sometimes he would laugh. He said if Krishna wanted this place to be a permanent blissful place, he would have made it that way. मेरे गुरुदेव कई बार हंसकर कहा करते थे अगर कृष्ण इस जगत को अस्थायी और सुखमय जगह बनाना चाहते हैं तो वो ऐसा बना सकते थे। It's a prison house. ये कारागार है। It's for those rascals who don't want to cooperate, surrender, serve Krishna. ये उन बदमाश लोगों के लिए जो कृष्ण के सहयोग नहीं करना चाहते, उनको शरणागत नहीं करना चाहते। Now, do we realize that? लेकिन क्या हम इस बात को समझ That's पाते हैं? another question. ये दूसरा सवाल है। Are we intelligent and sensitive and conscious enough to realize our condition here in the prison house of the material world? क्या हम इतने बुद्धिमान हैं अपनी स्थिति को समझ पाने के लिए इस भौतिक जगत में हम कैसे हैं? So Prabhupada is saying, if you don't realize that and you think you're happy, this is not for you. I don't even want to waste time arguing with you to convince you that actually this is a temporary miserable place and Krishna made it that way and therefore you should think how to get out of trouble.
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस बहस करने की कोई सवाल ही नहीं होता उस व्यक्ति से जो ये समझता है जो ये भौतिक जगत में सुखी रह सकता है, जबकि कृष्ण ने स्वयं कह दिया है कि मैंने इस जगत को अस्थायी और दुखमय बनाया है और कोई सवाल नहीं होता यहाँ कभी खुश रह पाने का। तो This place व्यक्तियों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। is made with threefold miseries. ये 3 भौतिक तापों से निर्माण किया गया है यहाँ। Adhyatmaka, adhibodhaka, adhidaivaka. Isn't it? The body, mind, always disturbed, especially in Kali Yuga. तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, विशेष करके कलयुग में शरीर मन जो है हमेशा परेशान रहता है, Harassing us, so disturbed. हमेशा हमें हताश करता रहता है, हम बहुत परेशान रहते हैं Why do इससे। you think the psychology and psychiatry and all this medication, why do you think this is trillions of dollars of business? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये जो मनोचिकित्सक वाले लोग हैं ये करोड़ों अरबों का व्यापार कैसे कर पा रहे हैं? Because everyone's harassed with this mad mind, isn't it? क्योंकि सब लोग- Uncontrolled mind and senses, सब लोग परेशान हैं अपने इस पागल मन से और अपने अनियंत्रित मन से, which is so disturbing and creating so much suffering condition. जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और हमारे लिए दुखमय परिस्थिति उत्पन्न करता है। And in other living entities, you're minding your own business, and other living entities will just, out of enviousness and jealousy and hatred, they'll just disturb you, agitate you, bother you. और आप बस अपना काम कर रहे होंगे और कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपके जीवन में आपको जो आपसे पूरी ईर्ष्या करता है, आपसे नफरत करता है, आपसे द्वेष करता है, आपसे जलता है, आपको पूरी तरह परेशान करेगा आके। It's also another type of suffering condition. No one can avoid it. एक और दूसरा तरह का दुखमय परिस्थिति है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। Even mosquitoes are biting and snakes are there, and wherever you go, you can't avoid it. यहाँ तक कि मच्छर है, कहीं सांप आके काट लेता है, आप कहीं भी जाएं आप बच नहीं पाएंगे। Right? Then you have tsunamis and earthquakes and wars and, you know, all of these storms, isn't it? और फिर सुनामी है, भूकंप है, युद्ध है, और ये सारी चीज़ों से आप कभी बच नहीं सकते। Cyclones in India, cyclone. और भारत में ये सुनामी आते, भारत में ये चक्रवात अक्सर आता रहता है। So nobody's asking for this thing. कोई भी इन चीज़ों के लिए मांग नहीं So कर many रहा। people dying, so many people harassed, losing everything, suffering like anything, right? बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित हैं, बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं, बहुत सारे लोग दुख भोग रहे हैं इन So चीज़ों से। Krishna designed it this way to be miserable. लेकिन कृष्ण ने निर्माण किया है इस जगत का पूरे कष्टों से भरा। Right? You don't design a prison house for like a 5-star accommodation. अब कारागार का निर्माण ऐसा 5 स्टार 5 स्टार 5 सितारा होटल की तरह नहीं करते। Right? It's a punishment. ये एक तरह का दंड है। So intelligent, wise person will realize, why am I being punished? तो बुद्धिमान चतुर व्यक्ति ये समझ पाएगा कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, Why am I suffering? क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ, Why so much anxiety, क्यों- so much disturbance? क्यों इतनी चिंताएं परेशानियां हैं, What's wrong? What am I doing wrong? मैं क्या गलती कर रहा हूँ, Why is this happening to me? मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? This is an intolerable situation. ये असहनीय स्थिति है। So I have to find a way how to get out of this. मुझे पता लगाना होगा मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ। That's intelligent. ये बुद्धिमान That's sensitive, ये not callous. इसमें मतलब आप जड़ नहीं हैं। So if someone is very calloused and very gross and very covered over and very ignorant, they cannot perceive all of it. They cannot feel that and perceive that. जो पूरी तरह जड़ है, जो पूरी तरह बुद्धिमान नहीं है और जो इन सारी दुखमय परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है, And then you tell them and they're like, what's your problem? Just enjoy your life, और आप उन लोगों को जाकर कहेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारी समस्या क्या है, अपने जीवन का आनंद लो। Why do you have to be so negative? Why are you so pessimistic? तुम इतने इतने छोटी सोच वाले या फिर इतने नकारात्मक सोच वाले क्यों हो? It's like someone's in like a burning fire, right? And he's saying, I'm getting burnt alive, right? And you're like, why do you have to be so negative and pessimistic, ऐसा है कि कोई जो है आग लगी हुई है उसमें वो जल रहा है और आप उसको पूछते हैं कैसा है सब कुछ, तो वो कहता है तुम अपने जीवन में इतने पेसिमिस्टिक, Why can't you just relax? नकारात्मक क्यों हो? आप बस आराम से क्यों नहीं रह सकते? Just relax, just be happy, be peaceful. What's your problem, आराम से रहिए, शांति से रहिए, आनंद लीजिए। I'm sorry, I'm in the burning fire right now. I'm dealing with something, मुझे माफ़ कीजिए, मैं जलते हुए आग में हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। My head's being crushed right now. I'm sorry, I'm a little disturbed right now, मेरा सर अभी टूट रहा है, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। Threefold miseries are crushing me and making me suffer. I'm sorry, I'm not happy for your pleasure,
ये 3 तरह के भौतिकता आप मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी खुशी से संतुष्ट नहीं हूँ। So, you know, and people just say, well, just be happy. और लोग कहते हैं बस खुश रहो। Okay, go to Vaikuntha, then you'll be happy. None of that is there. तो वैकुंठ चले जाइए, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। But if you're in a prison house, it means threefold miseries. That's the way Krishna designed it. लेकिन अगर आप कारागार में हैं तो यहाँ पर दुखमय परिस्थिति हमेशा मिलेगी, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा ही निर्माण किया है इसका। Even people are so crazy, they make a mental adjustment and they say, actually, this suffering is my pleasure. कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो लोग अपनी मानसिकता ऐसे कर लेते हैं कि वो इस दुख को भी कहते हैं ये दुख में ही सुख है। Right. So Bhagavatam is not meant for these people. तो भागवतम इन लोगों के लिए नहीं कहा गया। That's why Prabhupada is saying, look, you know, let's not even waste our time arguing, you know, that you're happy, that you can be happy in the material world. Okay, just enjoy your life, no problem. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे इस बहस का कोई मतलब ही नहीं बनता उन व्यक्तियों के लिए जो ये सोचते हैं इस भौतिक जगत में वो सुख है, बोलते हैं ठीक है जाओ आनंद, go for it. जाओ Figure it out. इस भौतिक सुख के लिए। There's no point in arguing that a materialistic man can be happy. इस बात पे बहस करने की कोई सवाल नहीं उठता कि कोई भौतिक व्यक्ति जीवन में खुश हो सकता है, Because Krishna designed it that way. क्योंकि कृष्ण ने निर्माण किया है इसका। So what are we arguing about? Oh, I can be happy in this world. Okay, be happy. Go be happy. तो हम किस बात के लिए बहस कर रहे हैं? मैं इस भौतिक जगत में खुश हो सकता हूँ, कहते हैं ठीक है जाओ खुश हो लो अपने जीवन में। So no materialistic creature, even Lord Brahma, down to the ant, can be happy because that's the way Krishna designed it. क्योंकि कोई भी भौतिक जीव यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक खुश नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा ही निर्माण किया है। And we're just busy trying to make adjustments, physical and mental adjustments, how to avoid the suffering. और हम बस व्यस्त हैं किसी तरह जो है भौतिक और मानसिक रूप से कुछ एडजस्टमेंट करके कि हम इस सब दुखों से मुक्त हो सकें। And we're trying to make a permanent plan for happiness. और हम एक अस्थायी योजना बनाना चाहते हैं सुख पाने की। If you ask anybody, are you making a plan? Everyone will say, yes, I'm trying to figure out a plan. अगर आप किसी से पूछेंगे आप कुछ योजना बना रहे हैं, कहेंगे हाँ मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं योजना बना रहा हूँ। And what is the basis of the plan? Is how to get rid of suffering and how to get happiness, isn't it? और प्लान योजना बनाने का आधार क्या है? कैसे मैं दुखों से पार आ सकता हूँ, कैसे मैं सुख हो सकता हूँ जीवन Who में? can deny that? कौन इसको अस्वीकार कर सकता So है? everyone's making a permanent, how to make a plan to make it permanent and happy. सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कैसे जो है अस्थायी और सुखमय जीवन बना सकें। So Krishna has made his plan that it's going to be temporary and miserable. तो कृष्ण ने अपना योजना बनाया है यह दुखमय होगा और अस्थायी होगा। And we're trying to compete with Krishna and make it permanent and blissful. और हम कृष्ण के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं और हम इस जगह को अस्थायी और आनंद पूर्वक बनाना चाहते हैं। This is foolishness. ये मूर्खता है। This is like a child's play. ये बच्चों का खेल है। So this is meant for intelligent people that realize, they're consciously realizing with intelligence, I am suffering and somehow some punishment is coming onto me, which is intolerable, and I cannot choose to live like this. I need a solution to get out of this condition. तो ये उन बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी चेतना से और पूरी बुद्धि से ये साक्षात्कार कर लिया है कि मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ और ये मेरे लिए असहनीय है, मैं इस जगह से बाहर आना चाहता, मैं इसको और सहन नहीं करना चाहता। Prabhupada said that is real intelligence. प्रभुपाद कहते हैं ये असल बुद्धिमानी है। So this materialistic world is called the darkest region of God's creation. तो इस भौतिक जगत को सबसे अंधकार पूर्वक जगह कहा जाता है। You can paint all the rainbows you want. आप जितना रेनबो की You know what is a rainbow? इंद्रधनुष, आप जितना भी चाहे इंद्रधनुष जैसी तस्वीर बना सकते हैं। Right? And these people, they have the paintbrush and they're making rainbows, you know, on the side of the wall. ये जो दीवार के किनारे जो है जो लोग इंद्रधनुष की तस्वीरें बनाते हैं सुंदर सुंदर, Or they'll say peace. The hippies were like peace. You know. और फिर वो ऐसा संकेत देते हैं जो शांति का संकेत वी। Like how? कैसे? It's the darkest region of God's creation, and we're painting rainbows and saying peace. ये भगवान के सृष्टि का सबसे अंधकार पूर्वक जगह है और हम यहाँ इंद्रधनुष की तस्वीर बना रहे हैं और शांति का संकेत दिखा रहे हैं। So even it's such a hellish situation under threefold misery, stringent laws of material nature. तो यहाँ तक कि ऐसी नरकीय परिस्थिति में और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत, And Prabhupada says, even though it's like that,
even those unhappy materialists, you can get out of that situation. यहाँ तक कि ऐसे दुख में ऐसे जो दुखी व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि वो इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं If they would just simply and sincerely desire to want to get out of that situation. अगर वो सरलता से इच्छा करें कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकूं मैं No, I enjoy suffering. नहीं मुझे दुख में ही I सुख don't मिल want रहा to है get out. I think it's very nice. मैं इससे बाहर नहीं आना चाहता मुझे लगता है यही बहुत अच्छा है So this is very unfortunate, very foolish. तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बहुत बड़ी मूर्खता है Because they do not want at all to escape. क्योंकि वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहते And Prabhupada has given the example of the camel just eating the thorns, getting blood and eating his own blood and saying, oh, this is very nice. This is how foolish creature we are. तो प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं ऊँट का जो कटीले टहनियाँ खाता है और अपने रक्त का ही स्वाद लेता रहता है प्रभुपाद कहते हैं ये इस तरह का जो बेवकूफ़ प्राणी है So if we don't realize the hellish nature of the material existence, why would we think to get out or to try to solve it? First we have to realize what is the problem, isn't it? अगर हम इस भौतिक जगत के दुखमय परिस्थिति का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं नरकीय स्थिति का तो हम क्यों इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे या यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे So those who realize it and want to solve it and get out and escape, they're meant for Srimad Bhagavatam. तो जो इस बात का साक्षात्कार कर पा रहे हैं और जो इसका समाधान करना चाहते हैं यहाँ से बाहर आना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम उनके लिए है Prabhupada talks in another place in Srimad Bhagavatam that when you are completely exhausted by it, materialistic life, materialism, frustrated, exhausted, श्री प्रभुपाद एक और तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम में बताते हैं अगर आप पूरी तरह से थक कर चूर हो चुके हैं भौतिक जीवन से भौतिकतावाद से पूरी तरह से disappointed, पूरी तरह निराश हो चुके हैं just fed up पूरी तरह से हताश हो चुके हैं with materialism, material life. भौतिकतावाद से भौतिक Prabhupada जीवन said से this is a great impetus to want to practice spiritual life. प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत बड़ा सहायता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए Sometimes my Gurudev would be preaching to us and he say, oh, these boys and girls not taking it seriously. They're thinking themselves happy. तो कभी भी प्रभुपाद प्रचार करते थे वो कहते थे ये जो लड़के लड़कियां हैं इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं ये खुश हैं And they're not really listening, not taking it seriously. और वो ना तो सुन रहे हैं ना इसको गंभीरता से ले रहे हैं Then our Gurudev used to pray, Krishna, please ask Maya to put heavy lashes onto this person. तो हमारे गुरुदेव जो है प्रार्थना करते थे और कहते थे माया से कृष्णा से प्रार्थना करते थे कि माया इनको जो है कड़ा से कड़ा प्रहार दीजिए जीवन में So he already convinced us that whatever pure devotee asks Krishna, Krishna will never say no. तो उन्होंने पहले ही हमें आश्वस्त कर दिया है कि शुद्ध भक्त कृष्णा से जो कुछ मांगते हैं कृष्णा उसको कभी ना नहीं कहते हैं So now that pure devotee is asking Krishna, Krishna, this one is not listening, can you please have Maya put heavy lashes on that one? तो अगर शुद्ध भक्त कोई किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहता है कि ये व्यक्ति ठीक से सुन नहीं रहा है समझ नहीं रहा है तो कृष्णा आप माया को कहिए इसके जीवन में थोड़ा कड़ा प्रहार डालिए And all of a sudden the devotees would get like shocked, like pure devotee just asked Krishna to put heavy lashes using Maya onto you. Now Maya is going to be looking for you, extra specially looking for you. तो जब शुद्ध भक्त इस तरह से भगवान से प्रार्थना करता है तो अचानक से वो भक्त जाग जाता है क्योंकि अब समझ जाता है कि शुद्ध भक्त अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से तब माया उसको ढूंढने निकलेगी अब उसको ढूंढ के रहेगी So विशेष we're not feeling the lashes of Maya. Okay, so you just need more heavy lashes of Maya. अगर हम माया का प्रहार को समझ नहीं पा रहे हैं जो हमें मिल रहा है तो हमें और बड़ा प्रहार चाहिए Because we're like animal, right? We're very gross. We're getting hit. We can't really feel it, right? अगर हम जानवर हैं थोड़ी मोटे चमड़े वाले हैं तो हम महसूस नहीं कर पाएंगे So you have to increase it तो हमें थोड़ा बड़ा करना होगा until we get the point, isn't it? जब तक हम बात समझ न लें So that's also mercy. ये भी एक कृपा है That's also Krishna's mercy. ये भी कृष्ण की कृपा Because है otherwise we're not paying attention, we're not taking it seriously. वरना हम ध्यान नहीं देंगे और हम गंभीरता से नहीं लेंगे We're not realizing threefold miseries, we're not realizing heavy lashes of Maya. हम तीन भौतिक ताप नहीं महसूस कर रहे हैं हम माया के द्वारा And if we don't realize that, don't feel like that, then we won't think, okay, how do I solve this and get out of trouble? How do I escape from this situation? अगर आप साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों सोचेंगे आप इस
समस्या का समाधान करना चाहते हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। And it usually takes like some catastrophe or some heavy, shock in our life, which makes this point more clear. और ज़्यादातर हमें जो जीवन में कोई ऐसा बड़ा दुखमय परिस्थिति देखना पड़ता है ताकि हम इस बात को अच्छे से समझ पाएं। Nobody's asking for that. कोई भी इसकी मांग नहीं कर But रहा, automatically it comes. You get big shock, लेकिन ये अपने आप ही आता है, आपको जीवन में कड़ा झटका लगता है, big punishment, big heavy lashes. Then you get, whoa, what's happening here, isn't it? बहुत बड़ा दंड मिलता है, बड़ा प्रहार मिलता है, तब सोचते हो क्या हो रहा है यहाँ। Then all of a sudden we get like big ears. और फिर अचानक से हमारे कान बड़े हो जाते हैं। So what were you saying? How can I solve my problem? फिर आप कहते हो क्या कह रहे थे आप, कैसे मैं अपनी समस्या का समाधान करूँगा। Oh, now you're finding some interest how to solve your problem. और अब आपको थोड़ा रुचि आ रहा है कैसे आपको समस्या का समाधान करना है। So Prabhupada says that this mercy of Srila Shukadeva Goswami in the Bhagavatam, it's available for all those sincere souls who want to get out of material existence. तो यहाँ बताया गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ये करुणा और कृपा दी है उन सारे जीवात्माओं के लिए जो गंभीर हैं और यहाँ से इस दुखमय परिस्थिति का समाधान करना चाहते हैं और यहाँ से बाहर आना चाहते हैं। Sometimes people come to the class and they listen, they say, hey, did you like the class? It's like nothing special, कभी लोग आते हैं उनको पूछते हैं कि आपको क्लास आपको कैसा लगा, तो कहते हैं इसमें कुछ विशेष नहीं था क्लास में, nothing special, इसमें कुछ विशेष नहीं था क्लास में। So the fire has to increase, isn't it? इसका मतलब जो है आग बढ़ाने की ज़रूरत है। My Gurudev used to say, like the man is so callous, he's like burning in the forest fire, and he comes out, his hair is on fire, right? Eyebrows, everything on fire, and say, hey, Mr. Patel, how are you? He said, I'm fine. कभी कुछ लोग इतने जड़ दिमाग के होते हैं, वो जंगल में जिस तरह आग लगी होती है, जंगल के आग से बच के बाहर आ रहे होते हैं, उनके सर में आग लगी होती है, आँख के भौरे में आग लगी होती है, फिर आप उनको पूछते हैं मिस्टर पटेल आप कैसे हैं, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। You have like buckets of water, right? You're ready to dump it on them, The guy's on fire, and they're like, are you all right? And he's like, I'm fine. आपके पास बाल्टी भरी है पूरी पानी की ताकि आप उसके ऊपर डाल सके आग बुझाने के लिए, आप उसको पूछते हैं आप कैसे, होते हैं मैं ठीक हूँ, मैं सब ठीक है। Couldn't be better. इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। Okay, it's not perfect, but हो सकता है सब कुछ पूरी तरह, things are great, things are grand. लेकिन सब कुछ अच्छे से चल रहा है। So we're so callous, so foolish, unfortunate, we could not even realize our own suffering condition. तो हम इतने मूर्ख हैं, इतने जड़ दिमाग वाले हैं कि हम अपने दुख में परिस्थिति का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। And if we don't realize that, then why will we look for solution? और अगर हम इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं तो हम समाधान क्यों ढूंढेंगे? Srila Prabhupada talks, if you want to solve your problem, you realize I got a lot of problem, I have to solve the problem, then you need a guru. The guru, Krishna will send you a guru to help you how to solve your problem. श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर कोई साक्षात्कार कर पाता है, उसके जीवन में बहुत समस्या है, तो वो गुरु की तलाश करता है और तब उसको गुरु प्राप्त हो पाते हैं। But if you don't think you have problem, you don't need a guru. अगर आपको लगता है आपके पास जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो आपको गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। Right? If somebody sees you're sick and you're getting sicker and you're like, no, I'm fine, अगर कोई आपको देखता है आप बीमार हैं और आप बीमार होते जा रहे हैं, कोई आपको पूछे आप कैसे हैं, तो मैं ठीक हूँ। Maybe you need a doctor, or I'll take you to the doctor. Maybe some medicine. तो आपको कहेंगे हो सकता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपको कोई दवाई देते हैं। It's like coughing, his lung is coming out, No, I'm fine, वो खांस रहा है तो उसका फेफड़ा बाहर आ जा रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। I shouldn't speak like that because you just took prasadam, so I don't want you to get a bad vision, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ये प्रसाद दिया है, तो मैं आप लोगों को आपके दिमाग में ऐसे गलत दृष्टि नहीं डालना चाहता था। So it's very important. You see, all Vaishnava preachers, sadhu, guru, they're always explaining what is the reality of our situation, so that we can understand how much trouble we're in, how much we're suffering, and how nothing is working. Otherwise, how will we be open to receive a solution? If you don't think there's a problem, why you'll be open to receive a solution? तो साधु आते हैं, वैष्णव आते हैं, हमारी परिस्थिति की सच्चाई हमें बताते हैं और हम देख पाते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है, हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम कर पा रहा है। जब तक हम इसका साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक हम समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास क्यों करेंगे?
Again, Prabhupada says later in the purport, right? और प्रभुपाद Those who बाद are में really anxious to get out of the suffering of material existence. जो बहुत गंभीर हैं इस भौतिक अस्तित्व से बाहर आने के लिए, दुखमय स्थिति से बाहर आने के लिए, They may take complete shelter of Srimad Bhagavatam. वो पूर्ण आश्रय ले सकते हैं श्रीमद् भागवतम का। It's meant for this purpose. ये इसी उद्देश्य के लिए है, It's like a torchlight, जैसे एक दिव्य प्रकाश है, transcendental torchlight. दिव्य प्रकाश है। It's like someone's walking in the dark and crashing into everything, you know, and you're like, you want to use my flashlight, you know? No, I'm fine, you know. अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में जा रहा है, सबसे टकराते हुए गुजर रहा है, तो आप उसको कहते हैं, और आप एक ये मेरे पास एक टॉर्च है, आप लेना चाहेंगे उसको? He's cracking his head, you know, blood is coming, you know, he's stumbling over the furniture, you know. वो जो है अंधेरे में टक्कर मार रहा है, उसका सर फूट जा रहा है, सर से खून बह रहा है और फर्नीचर से टकरा रहा है सारे। And then some gentleman is like, I have flashlight, that will help you. No, I don't need flashlight, you know. और कोई सब व्यक्ति आके कहेगा मेरे पास एक टॉर्च है, टॉर्च लाइट लीजिए। नहीं सब ठीक है, सब I'm doing just fine. मैं सब कुछ ठीक कर रहा I enjoy groping in the darkness. हूँ। मुझे तो असल में मजा आ रहा है इस तरह अंधेरे में भटकने में। This is my fun. I ये मेरा have मजा fun doing this. So this is not the right candidate for this information, isn't it? ये सही व्यक्ति नहीं है इन सारी जानकारियों के लिए। And it's interesting because in the translation, और ये बहुत रुचिकर है क्योंकि अनुवाद में बताया गया है, it says that Shukadev or Srila Vyasadeva, Shukadev Goswami, out of great compassion, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने अपने बहुत करुणा की वजह से for gross materialistic people who are struggling how to cross over the darkest region of material existence, they deserve compassion. तो ये पूरी तरह भौतिकतावादी कर्मी लोग जो इस संघर्ष कर रहे हैं इस अंधकार में भौतिक अस्तित्व के और यहाँ से बाहर आना चाहते हैं, ये उनके लिए है श्रीमद् भागवतम। Because they're trying to solve their problem, they're trying to get out of the trouble. क्योंकि वो समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। So they just need some compassion and some instruction, some help how to do it. तो उनको कुछ करुणा चाहिए, उनको कुछ निर्देश चाहिए कि वो कैसे ये कर पाएंगे। They say, here's the compassion, here's the solution, but the person they're not looking for a solution. यहाँ पे करुणा है और ये निर्देश है, लेकिन और समाधान है, लेकिन व्यक्ति समाधान ढूंढ नहीं रहा है। So they can't take advantage of the compassion and the mercy. तो वो करुणा और कृपा और समाधान का फायदा नहीं उठा सकते। So the mercy has to come in another form. तो कृपा जो है दूसरे रूप में देना होगा। Heavy lashes. कड़ा प्रहार। That's why Srila Prabhupada says you can learn by hearing or by heavy stick. तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि या तो आप श्रवण से सीखेंगे या डंडे से सीखेंगे। Right? So we're like ass, you know, we always need to like get hit to get motivated, you know. तो हम गधे के जैसे हैं, इसलिए हमें हमेशा डंडे की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। If you go up to the ass and you say, my dear ass, you know, can you please move up about 10 meters, you know. अगर आप किसी गधे के पास जाके कहेंगे, मेरे प्रिय गधे, क्या आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 10 मीटर थोड़ा आगे बढ़ेंगे? The ass is going to say, oh yes, of course. तो क्या गधा आपको कहेगा, हाँ ठीक है, एकदम बढ़ता हूँ आगे? And even if he looks at the man, he doesn't know what is this man and what is he saying to me. I have no idea. यहाँ तक कि वो गधा आदमी की तरफ देखेगा, बोलेगा ये आदमी कौन है, ये क्या कह रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा गधे को। Then he comes out with a big stick, isn't it? तो वो आदमी हाथ में डंडा लेके आता है। And he still doesn't understand what's happening. तब भी गधा नहीं समझता है इसका There's क्या a मतलब है। man telling something and he has something in his hand. तो वो आदमी है, उसके हाथ में डंडा है, वो मुंह से कुछ कहना चाह रहा है। I don't know what is this. तो गधा समझ नहीं रहा है ये क्या Because है, he's an ass. क्योंकि वो गधा है। Right? Then what? Whoa! He starts whacking him, right? फिर वो उसको पीटने लगता है गधे को। Then he says, whoa, 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 yeah. All of a sudden, right? फिर गधा आगे बढ़ Now he got the point, ये गधा right? समझ गया बात। So Krishna is trying to attract us. तो कृष्णा हमें आकर्षित करने का The प्रयास कर Sadhu रहे हैं। Guru Vaishnavas, holy name, all this way trying to attract us. साधु गुरु वैष्णव भगवान का दिव्य नाम हमें आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। But we're like a worms in the stool. लेकिन हम विष्टा के कृमि जैसे हैं। My Gurudev used to call like you're like hogs. मेरे गुरुदेव कहा करते थे तुम लोग सुअर के जैसे हो। Or sometimes he say you're like two-legged animals. कभी कभी कहते थे वो दो पैर वाले जानवर हैं। Just no horns and no tail. बस सींग नहीं है, पूंछ नहीं है।
That's only difference. बस एक ही But यही एकमात्र अंतर mentality, है। same. लेकिन मानसिकता वही This है। is not flattering. ये कोई हंसाने वाली बात नहीं है। Right? Only thing missing, no horns and no tail. But you're like two-legged animal, you know. एक ही चीज जो नहीं है, जो सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, So बाकी चीज वही now है। you won't take a good advice. Okay, well, here's a heavy stick. तो अगर आप अच्छी सलाह नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए एक मोटा डंडा है। Yes, Maya, please put more heavy lashes on हाँ this माया, one. माया इस आदमी को और मोटा डंडा मारो। I remember one time a Gurudev said to one devotee, he said, next life you're going to take birth as a hog. I मुझे याद promise है। you. मुझे याद है एक बार गुरुदेव ने एक भक्त को कहा कि अगला जन्म तुम्हारा सुअर का जन्म होगा। And he got scared because he knows और that वो- this sadhu just basically cursed him, isn't it? और वो व्यक्ति थोड़ा डर गया क्योंकि वो समझ गया कि ये साधु ने असल में मुझे श्राप दिया है। Now Srila Prabhupada explains the curse of the sadhu, Guru Vaishnava. It's not really a curse, it's a blessing, but it's just coming in different way. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि साधु का अभिशाप भी जो है एक तरह का कृपा होता है, लेकिन ये दूसरे रूप में प्राप्त हो रहा होता है। Nalukuvera, Manigriva, right? They got the cursed, right? नल कुबेर मणिग्रीवा, उनको अभिशाप मिला। Oh, you want to be naked? Okay, stand as trees for the next 60,000 years. अगर आप नंगे रहना चाहते हैं, ठीक है, पेड़ की तरह खड़े रहिए 60,000 सालों तक। But he put them in the courtyard of Nanda Maharaj, right? लेकिन वो नंद महाराज के आंगन में बढ़े। So even the curse, chastisement of Sadhu Guru Vaishnava is actually a blessing. यहाँ तक का साधु का दंड, साधु का अभिशाप भी एक वरदान होता है। But in our ignorance or childishness, we don't understand it. लेकिन हमारे अज्ञान में, हमारे बचपने में हम इसको समझ नहीं पाते हैं। Right? Why Gurudev being so heavy with me? क्यों गुरुदेव मेरे ऊपर इतने भारी होते हैं? Why he's punishing me? Why he chastising me? क्यों मुझे वो दंड दे रहे हैं? क्यों मुझे वो Why he not डांट रहे हैं? appreciating my seva? क्यों मेरी सेवा की सराहना नहीं कर रहे हैं? Why he not seeing my devotion? क्यों मेरी भक्ति देख नहीं पा रहे हैं? Chanakya Pandit, he said the father, the guru, right, is supposed to find fault with the child चाणक्य or the पंडित disciple. चाणक्य पंडित बताते हैं पिता और गुरु, उनका कर्तव्य है अपने शिष्य, अपने बेटे के सारे दोष को निकालना। Even you might be doing many things nicely. हो सकता है बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से कर रहे हैं, But if our goal is perfection, means he'll point out what we're not doing properly. तो अगर हमारा लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना है तो वो हमारे दोस्त को बताएंगे हम क्या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। Prabhupada says in one place, he said, many places, he said, if you want to see if Krishna is happy with you, see if your spiritual master is happy with you. श्रील प्रभुपाद ने कई जगहों पर ये बताया है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कृष्ण आपसे प्रसन्न है या नहीं, तो आपको ये देखना होगा कि आपके आध्यात्मिक गुरु आपसे प्रसन्न है या नहीं। Krishna will show you through the guru. कृष्ण आपको दिखाएंगे गुरु के माध्यम से। No, my guru, I don't know what my guru's problem is. I think Krishna is happy with me. मुझे पता नहीं मेरे गुरु का क्या समस्या है, लेकिन कृष्णा मुझसे खुश है। Maybe he's in a bad mood today. I don't know what is his हो problem. सकता है आज अच्छे भाव में नहीं, अच्छे Maybe he didn't sleep properly. हो सकता है अच्छे से नींद नहीं आया आज, इसीलिए I don't know. पता नहीं। I think Krishna's happy with me. मुझे लगता है कृष्णा मुझसे खुश है। As far as I'm concerned, he's happy with me. जितना मुझे पता है कृष्णा मुझसे खुश है। So you have any questions or points? किसी कोई सवाल है, कोई बात? Yeah? Yes, Mataji. She's also very eager. वो भी बहुत उत्सुक हैं। Are you looking for heavy lashes? Are you asking for that? क्या आप कड़े प्रहार की मांग कर रहे हैं, उसके No, लिए आप nobody- आगे देख रहे हैं आप? Nobody's asking for that? कोई इसके लिए पूछ नहीं रहा है? Hare Krishna. Yes, give me more heavy lashes. हाँ, और कड़ा प्रहार दीजिए मुझे। Maharaj, I'm a little confused. So, Sit. my question is, in the last 2 days that we've been in the class, we've been talking about surrendering to Lord Krishna and to go on the path of bhakti. Yeah. Now, my husband is in the defense forces. My what? And my husband is in the defense forces. He's in the Indian Air Force. It's Air Force. Talk loud. Air Force, like military. My husband is in the No, I'm Indian- asking him. Sorry. I thought you were not hearing. Sorry. Yeah. I don't, honestly, I don't have great hearing. I can talk loud, that's not a problem. Right. I'll talk slow also. And I'm trying to get used to the accent because I just came back to India.
Oh wow. Yeah, so it takes me like a week or two to like change the, you know, the dial. So after 1 or 2 weeks, it'll be much easier for me to understand तो you. कुछ समय के बाद, काफ़ी समय के बाद मैं भारत में आया हूँ, तो मैं थोड़ा इंडियन एक्सेंट जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उच्चारण को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा 2-3 हफ्ते मुझे लगेंगे ताकि मैं इसको सही तरीके से पकड़ पाऊँ आपकी अंग्रेज़ी को। So I'm asking because I sincerely want to understand क्योंकि you. मैं पूछ रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैं ईमानदारी से समझना चाहता हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। So what is it? So your husband working in military air force. Yes, Krishna's flying much higher than your husband. कृष्णा आपके पति से भी ज़्यादा ऊपर उड़ रहे हैं। Yes, he flies much higher. वो I'm very sure I want my husband to leave Indian Air Force and come to Bhakti, but that's where my confusion is. My confusion is with this man-made borders, with every king in the world coming to a halt with wars, with people trying to be very envious of each other, which is what we've been talking in the class. Even some people who want to leave the material world cannot because they have some earthly duties. That's up to Krishna. That's what I'm confused. If that's up to Krishna, then how do I ask him to surrender? Because he has some duties to fulfill towards his motherland also, right? But why would I want my husband to go to war for President Joe Biden's stupid politics? I don't want him to do Are you that. attached to your husband? क्या Sorry. Are you attached to your husband? I'm very attached. Who was not attached to their husband? I'm very attached to my husband. I love my husband. Oh. Why don't you love Krishna as much as your husband? आप कृष्णा से प्रेम क्यों नहीं करते? That is where I'm confused. I love Krishna and I'm also confused. On one hand, you're saying surrender to Krishna. So if you love Yeah. Krishna, अगर आप then कृष्णा से प्रेम Krishna, करते whatever Krishna does with your husband, that's best for everybody. हैं, तो जो भी कृष्णा आपके पति के लिए श्रेष्ठ चाहते हैं, वो सभी के लिए श्रेष्ठ होगा। So if he wants to kill you, if Krishna wants to kill you, who will save you? अगर कृष्णा आपको मारना चाहते हैं, आपको कौन बचा सकता है? And if Krishna wants to protect you, it said, then who can kill you? और अगर कृष्णा आपको बचाना चाहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कौन आपको मार सकता है? So then what is the definition of dharma and duty? What is the definition of dharma and duty? There's dharma on the platform of the soul, responsibility on the soul platform. आप उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं आत्मा के स्तर पे, That is Sanatan Dharma, Bhakti. तो वो सनातन धर्म है भक्ति। And there's dharma, man-made dharma on platform of the body. और मानव निर्मित धर्म है जो शरीर के आधार पे बनाए गए हैं। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को महाराज जनक का एग्जाम्पल क्यों दिया कुरुक्षेत्र में कि उनसे बड़ा राजा और उनसे अच्छा राजा कोई नहीं था? So why? अगर धर्म और ड्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर उनका एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र में नहीं देना चाहिए था ना कृष्ण जी को? So Krishna he gave the example of King Janak Maharaj in the battlefield of Kurukshetra to Arjuna because he followed the prescribed rules regulations very nicely. He gave the example to Arjuna like he followed very nicely, so you should also follow. So whatever Krishna tells you to do, So जो भी कृष्ण आपको करने के लिए कहते हैं, then if you follow that, that is Sanatan Dharma. आप उसका पालन करते हैं, वही सनातन धर्म है। So Krishna wanted Arjuna to fight in the war, Kurukshetra, तो कृष्ण अर्जुन के लिए चाहते थे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करें, and Krishna said, but do it for me. लेकिन कृष्ण ने कहा ये मेरे लिए करो। So that's Sanatan Dharma, that's Bhakti. तो ये सनातन धर्म है, ये भक्ति। So whatever your nature is and whatever your responsibilities are, whether you're brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, तो Brahman, Kshatriya, what is it? Vaishya, Shudra. Right? Just do it for Krishna. तो जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आपकी क्षमता है, आपके गुण कर्म के आधार पे आप या तो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, या फिर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पे जो भी आपका कर्तव्य है, जो कृष्ण आपसे चाहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं वो सब कुछ करो, वो मेरे लिए करो।
Now the question is to understand in a crystal clear way, what does Krishna want your soul to do? तो अब हमें एक चीज़ जो शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए कि कृष्णा मुझ जीवात्मा के लिए क्या चाहते हैं. Whether you should be married or not married, अब or शादी this job, this service or that service, right? Krishna will say. आपको शादी करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, कृष्णा बताएंगे. Whether it's here or there, in this town or city or country, right? Krishna will say. इस जगह पे, उस जगह पे, इस शहर में, दूसरे शहर में, इस देश में, दूसरे देश में, कृष्णा बोलेंगे. So we talked the other day that if we just ask Krishna, please kindly make it crystal clear what you want me to do in this situation, just like Arjuna said, please tell me decisively, specifically, what should I do? तो जैसे हम पिछले क्लासों में बात कर रहे थे कि हम पूछना चाहिए, अगर हम कृष्णा से पूछे कृपया मुझे शीशे की तरह मुझे साफ साफ बताइए, अगर हम गंभीर ईमानदार हैं कि मुझे इस वर्तमान समय में, जिस तरह अर्जुन ने पूछा कि मुझे विशेष रूप से बताइए, निश्चित रूप से बताइए, मुझे इस समय में क्या करना चाहिए. So what is God? What is Krishna's will and desire? तो कृष्णा की क्या इच्छा है, कृष्ण की क्या आपके लिए That we need to know. ये हमें जानना है. And we need the strength and ability to not only understand it, but to carry it out. और हमें शक्ति चाहिए, क्षमता चाहिए, ना तो सिर्फ इसको समझने के लिए बल्कि इसको पूरा करने के लिए भी. That is real dharma. ये असल धर्म है. So if my intuitions keep telling me that I have to pursue my dream to protect my motherland, and every time that I go ahead in this plan, I see Krishna's willingness, should I keep going on to it, even though, I mean, on one side I want to, that's where I'm confused. On one side, I want to be in the Bhakti movement because I'm highly influenced by people like Mirabai from our culture, from people like Buddha who are from our culture. And You see, Arjuna, he thought, but Arjuna thought if I'm fighting in this war as a Kshatriya, right, then I'll commit the sinful activities. And how I can break the Dharma, right? But Krishna said, no, your nature will make you fight anyway, but do it as a service to me. तो अर्जुन सोच रहे थे कि मैं क्षत्रिय के रूप में अगर इस युद्ध में युद्ध करूं और लोगों को हत्या करूं तो फिर मैं पाप कर्म करूंगा. तो कृष्णा ने कहा क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही क्षत्रिय का है तो तुम अपने स्वभाव से ही तुम लड़ाई में युक्त होगे, और क्योंकि तुम उसमें होने ही वाले हो तो तुम उसको मेरे लिए करो, मुझको अर्पण करो. So nobody is asking you to be a sannyasi. तो कोई भी आपको सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा. Right? thank you, Maharaj. Thank you so much, Hare Krishna. So Srila Prabhupada explained that the bona fide guru, he knows the psychophysical nature of the student. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु जानते हैं किसी शिष्य का मनोधर्म और गुण और क्षमता क्या है, स्वभाव क्या है. And my Gurudev explained it that the guru, he knows what is Krishna's intention for you. और मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि गुरु को पता है कृष्ण का उद्देश्य क्या है आपके लिए. But do we want to know what is Krishna's intention for us? लेकिन क्या हम जानना चाहते हैं कि कृष्ण का क्या उद्देश्य है हमारे लिए? That's required first of all. ये सबसे पहली आवश्यकता है. So when people want to know what do you know, Maharaj, what does Krishna want me to do? तो कई बार जब लोग आकर मुझे पूछते हैं महाराज मुझे बताइए कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं. I always ask them, well, did you ask Krishna? Are you praying to Krishna to find out what he wants you to do? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कृष्णा से प्रार्थना की, क्या आपने कृष्णा से पूछा कि वो कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं? And are you prepared to try your best to follow it? और क्या आप तैयार हैं पूरी तरह अपना श्रेष्ठ देने के लिए, उसका पालन करने के लिए? Then if you're like that and you're praying to Krishna and I'm praying to Krishna, then why Krishna won't help us to clearly understand? तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं और मैं कृष्णा से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप कृष्णा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो कृष्णा क्यों हमारी मदद नहीं करेंगे ये जानने के लिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं? Then you get the perfect knowledge from perfect source. तो आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा पूर्ण स्रोत से. And even Krishna says, better you do your service even imperfectly.
और कृष्ण यहाँ तक ये भी कहते हैं आप अपना काम कीजिए, यहाँ हो सकता है वो उसको आप अपूर्ण तरीके से कर पाएं, than to try to do someone else's service perfectly. यहाँ तक कि इसके बजाय कि आप दूसरे का कोई काम करने की कोशिश करें पूरी निपुणता से। So when you really want to know what Krishna wants you to do, and you're ready to try to understand it and follow it, then Krishna will send you bona fide guru. तो जब आप असल में ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं और आप पूरी तरह तैयार हैं और उसका पालन करने के लिए, तो कृष्ण आपको आपके जीवन में प्रमाणिक गुरु भेजेंगे। So the guru, Krishna, Chaitya Guru, that's Krishna, Super Soul, Paramatma, he's in the heart. तो कृष्ण परमात्मा चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में है। Then external manifestation of Paramatma, that's Shri Guru, that's spiritual master. तो परमात्मा का बाहर प्रकट जो रूप है वो परमात्मा, वो श्री गुरु है। So Krishna speaks through the spiritual master. तो कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से बात करते हैं। And when you hear those words, that vibration, then Krishna inside will give you intelligence and faith to accept it that that's coming from him. और जब प्रमाणिक गुरु वो बातें कह रहे होंगे तो वो शब्द ध्वनि जब आप सुनेंगे तो कृष्ण जो परमात्मा रूप में आपके हृदय में स्थित हैं वो आपको बुद्धि देंगे, वो आपको श्रद्धा देंगे ये बताने के लिए कि ये चीज़ें मुझसे आ रही हैं। And you'll hear that if you sincerely want to know and you're prepared to understand and to follow it, to try your best to follow it. अगर आप उसको सुन पाएंगे, अगर आप अपना श्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं, उसको समझने के लिए, उसको पालन करने के लिए। When I met my spiritual master, somehow Krishna, I already understood what my future was and what my service was. तो जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला, किसी तरह मैं पहले से ही पूर्ण रूप से मुझे ज्ञात था कि मेरी किस तरह की योग्यता है। By Krishna's mercy. कृष्ण की कृपा से मैं समझ पाया था। But when I met my Gurudev, without my even asking anything, he just exactly told the same thing that Krishna already telling me. तो मेरे गुरु से मिलने के बाद उन्होंने मुझे वही चीज़ कहा जो कृष्ण मुझे मेरे अंदर भीतर से कह रहे थे, वही चीज़ उन्होंने मुझे सामने से कहा, यहाँ तक कि मैंने उनको सवाल भी नहीं पूछा, उन्होंने खुद मुझसे कहा ये। So we need a confirmation from inside and outside. तो हमें पुष्टिकरण चाहिए भीतर से और बाहर से भी। And through the Shastra. और शास्त्र के माध्यम से। So if all of that is coming from Krishna, inside, outside, through the instruction of the Shastra, it'll all be exactly the same instruction. तो ये सब कुछ जो भी कृष्ण से आ रहा है, भीतर से, बाहर से और शास्त्र से, ये सब एक ही निर्देश देगा आपको। That's the beauty and the benefit and freedom of having a bona fide spiritual master. तो ये सुंदरता है, ये फायदा है, ये आज़ादी है कि आपको प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो। Because you don't have to speculate. फिर आपको इस तरह मनोधर्म नहीं करना पड़ेगा। If you don't speculate, because when we speculate, we create always the worst case scenario, isn't it? इस तरह जब हम मनोधर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सबसे बुरा दृश्य निर्माण करते हैं। So by hearing Krishna through the Guru Sadhu Shastra, you're free from mental speculation and all the negativity and the creation of scenarios which may never even happen. तो अगर कृष्ण को हम श्रवण कर पा रहे हैं गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से, तो ये सारा हमारे मन का मनोधर्म और जितना हम निर्माण कर रहे हैं अलग अलग दृश्य अपने मन में, ये सारे नकारात्मकता, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। And all the uncertainty will disappear from you. और जितनी अनिश्चितता है वो सब विलुप्त हो जाएगी। And then it'll be crystal clear what are you supposed to do. फिर आपके लिए शीशे की तरह साफ हो जाएगा आपको क्या करना है। Then that's a real freedom. ये असल आज़ादी है। Then you can have peace of mind. तब आपके मन की शांति प्राप्त And हो you सकती can है। put all your energy to what Krishna wants you to do. You don't have to waste all of your energy and time and energy and resources. तो फिर अपना सारा शक्ति ऊर्जा जो है उसके पीछे लगा सकते हैं जो आप कृष्ण आपसे चाहते हैं। इसका मतलब आपको अपना समय, आपकी शक्ति और आपका सारी संपत्ति आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। But if we think we're fine and we have everything figured out and we know ourselves better than anybody, and you're happy with all of that, then you don't need a guru. लेकिन अगर आप सोचते हैं आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आप स्वयं को खुद से आप जितना स्वयं को जानते हैं उससे बेहतर और कोई नहीं जानता, तो आप कृष्ण आपकी मदद नहीं कर सकते। Then we'll just act as our own guru. तो हम खुद के गुरु के रूप में काम कर रहे हैं। Then the only question is, are you happy with the results you're getting acting as your own guru? तो अब दूसरा सवाल ये है कि आप उस फलों से संतुष्ट हैं जब आप खुद के गुरु के रूप में काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको फल प्राप्त हो रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? If you're happy with that, then continue on. अगर आप उससे खुश हैं तो लगे रहिए।
If you're not happy with your results and where you're at, then we need a better information. तो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, जो फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो आप स्वयं के गुरु के रूप में कार्य करने से, तो आप यहाँ आ सकते हैं. Some guidance, some clarity, we need that type of help. कुछ दिशा निर्देशन, हमें कुछ सफाई, इस तरह की हमें मदद चाहिए. It says the only question to ask the Guru is, what does Krishna want me to do for him? What is Krishna's desire from me? That's the only question to the Guru. गुरु से ऐसे कहते हैं, गुरु से हमारा सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए कि कृष्णा की क्या इच्छा है मेरे लिए. You don't say to the Guru, you know, what stock should I invest in, you know? अब गुरु के पास जाके ये नहीं पूछेंगे कि कौन से स्टॉक में मुझे निवेश करना है. Should I pull my money, put it into gold or cryptocurrency, or, you know? तो मुझे अपना पैसा जो है सोने में लगाना चाहिए कि जो नकली धन में लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए. That's not the question to the Guru, you know? गुरु से ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए. But if you say, okay, how can I purify myself and get out of Maya and surrender to Krishna? How do I do that? Then you need a Guru. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं आप कैसे स्वयं को शुद्ध करें और कैसे कृष्ण को शरणागत हो सके, कैसे माया से बाहर आ सके, तो इसको जानने के लिए आपको गुरु की जरूरत है. If you think you're happy and you're fine and you're happy with your results, you don't need a Guru. अगर आपको लगता है आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, आप अच्छे हैं अपने फलों से, तो आपको गुरु की कोई ज़रूरत नहीं. Let's see how it goes. देखिए कैसा जाता है. Let's see how well your plan works out. I'm not going to argue. Professor, I'm not going to argue with you. You think you're happy, you think your plan's going to work, you know, go for it. This is not meant for you. प्रभुपाद कहते हैं बहस का कोई सवाल ही नहीं होता. आपको लगता है आपका योजना काम करेगा, आप उससे खुश हो पाएंगे, करके देख लीजिए. You think you got it all worked out. Why you don't need Guru and Krishna. You just see how well it works, you know. आपको गुरु कृष्ण की ज़रूरत नहीं है. आपको पहले से ही पता है ये सब कुछ काम करेगा, तो आप देखिए करके कितना अच्छे से होता है वो. Many places Prabhupada said, just learn how to trust Krishna. कई जगहों पे श्री प्रभुपाद ने कहा है ये बस सीखिए कैसे कृष्ण पर भरोसा करना है. Krishna, he's the father, he's seed-giving father. कृष्ण पिता हैं, वो बीज प्रदाता पिता हैं. He's well-wishing friend of every living entity. वो सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक मित्र हैं. He is our protector. वो हमारे रक्षण करता है. He knows what's best for us. वो जानते हैं हमारे लिए सबसे He श्रेष्ठ knows क्या है. past, present, and the future. वो भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं. What are we trying to figure out? हम क्या पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं. That's our foolishness. ये हमारी मूर्खता Oh, है. I'm just trying to figure it out, you know. वो मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ. There's nothing to figure out. कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है. Krishna already figured it out. कृष्ण सब कुछ पहले से पता लगा चुके हैं. Now it's just Krishna, what did you figure out? अब बस सवाल ये है कि कृष्ण आपने क्या पता लगाया. What's the plan? योजना क्या है. Then once Krishna tells you, then you say, please give me ability, strength to surrender, accept it, and try my best to execute it. That's it. और एक बार कृष्ण ने आपको बता दिया क्या योजना है, तो अब हमें बस इतना प्रार्थना करना है, हमें शक्ति दीजिए, हमें क्षमता दीजिए और अपना श्रेष्ठ देकर मैं इसका पालन कर सकूं और इसको पूरा कर सकूं, अच्छे तरीके से समझ सकूं. Now you're doing Sanatan Dharma. अब आप सनातन धर्म कर. Now you're watering the root of the tree. अब आप पेड़ के जड़ पे पानी डाल रहे हैं. Automatically everyone else will be satisfied with. अपने आप ही सब कुछ सारी संतुष्टि प्राप्त होगी. And all your fear and anxiety will leave you. और सारा भय चिंता आपसे मुक्त हो जाएगा. That's, Prabhupada said this is a great boon. It's such a great benefit and gift. प्रभुपाद बताते हैं ये बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा उपहार है. And the freedom. आज़ादी. You think, oh, surrendering to Guru and Krishna means you're losing your freedom. ऐसा नहीं गुरु कृष्ण को शरणागत करेंगे इसका मतलब अपनी आज़ादी खो देंगे. But actually, we're not free. We're just under the grips of Maya and threefold miseries and suffering. असल में Where's हम freedom? असल में हम कभी आज़ाद नहीं हैं. हम माया के प्रभाव में हैं. माया के प्रभाव में, तीन गुणों के प्रभाव में बस दुख भोग रहे हैं, कड़ा प्रहार झेल रहे हैं. Uncontrolled mind and senses, completely disturbed. Yeah, but at least I'm free. अनियंत्रित मन और इंद्रिय है. हम सोचते हैं हम पूरी तरह आज़ाद हैं. You like that quality of freedom? आपको पसंद है इस तरह का आज़ादी? All right, Madhavji? ठीक है माता जी. Hare Krishna. Yes? Now we understood each other. अब हम एक दूसरे को समझ रहे हैं. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. Yesterday you answered me that
you don't need to play the victim. If you want Krishna, then you have to go forward to the Krishna. Yeah. Then I thought, yes, you are right. Yeah, Prabhupada said you just have to desire to get out of Maya Yeah. and how to get Krishna. Yeah. It's up to desire Yeah. and strength of desire. So you say, oh, I have some desire to get out of Maya and to get Krishna, but how strong is that desire? तो सब कुछ जैसे हमने बताया इच्छा के आधार पे है और इच्छा शक्ति के आधार पे है कि अगर हम कृष्णा को आश्वस्त कर सके हमारी इच्छा और इच्छा शक्ति पे हम इससे बाहर आना चाहते हैं. So Krishna is weighing the strength of our desires. तो कृष्णा वजन नाप रहे हैं हमारी इच्छा शक्ति का. And he's the witness and the judge. और वो गवाह है, वो न्याय करेंगे. The nice way to see when you're chanting in the morning Hare Krishna Mahamantra, ये बहुत अच्छा तरीका है ये देखने का जब आप just हरे be कृष्ण very मंत्र जप- thoughtful. What are you desiring while you're chanting? जब ये विचार कीजिएगा उस समय कि आप क्या इच्छा कर रहे हैं जब करते समय. Are you desiring just to solve your problem? क्या आप इच्छा कर रहे हैं अपनी Are समस्याओं you का समाधान desiring करने just to के लिए? get some money, some husband, some, you know, get rid of your suffering condition? क्या आप इच्छा कर रहे हैं पैसे का, पति पाने का, या कोई अपने सारे समस्या से बाहर निकलने I का? want my child to pass this exam, मैं अपने बच्चे का एग्जाम पास करवाना चाहती हूँ. right? So I'm not your judge. I'm just asking if you want to know. Krishna's the witness and the judge. So while we're chanting his name, what are we actually thinking about? What are we actually asking him? तो मैं असल में What are we आपका demanding? मैं असल में आपका न्याय नहीं कर रहा, कृष्ण आपका न्याय कर रहे हैं. जब आप कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप क्या इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं, किस तरह का सोच रख रहे हैं. कृष्ण का नाम लेते समय कृष्ण उसका न्याय करेंगे. So it's not from what's from the lips, it's really what's from the heart. तो असल में बस ये होठों से नहीं है, आपके हृदय में क्या है. That's why it says you cannot cheat Krishna. इसलिए कहते हैं आप कृष्णा को ठग नहीं सकते. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Right? We're saying from the lips. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. Sometimes it calls it like your prayer is like a lip deep. कभी कभी हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जब हम बस होठों से कर रहे होते हैं, इसलिए कभी ये कहावत भी है कि हमारे जो प्रार्थना है ये बस इसकी गहराई बस हमारे होठों तक है. So that, you know, like crocodile tears, you know. तो ये मगरमच्छ के आंसू हम रो रहे हैं. Put some chili in your eyes or some tears coming, you know. आंखों में थोड़ी मिर्ची डालो, थोड़ा आंसू बहेंगे. Crying for Krishna. और कृष्णा के लिए रो रहे हैं. So that's not going to fool Krishna. तो ये कृष्णा को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा. Right? So what is in the heart of hearts? Even you have material desire, even you have material attachment, but if in the middle of that you're saying this is not good for me and I don't want it and somehow I have to get you, the strength of that prayer, that's what Krishna is going to listen to. तो यहाँ तक कि आपके हृदय में क्या है, आपके हो सकता है आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हों, बहुत सारी भौतिक आसक्तियाँ हों, लेकिन इन सब के बीचों बीच में आप ये समझ पा रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता. और आप जब उस इच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं तो उस इच्छा शक्ति की उस इच्छा में कितनी शक्ति है उसको मापा जा रहा है. You're just starting spiritual life, of course you have material desires and material attachments. अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अवश्य आपके जीवन में बहुत भौतिक इच्छा, भौतिक What are you going to act आसक्ति. like, oh, I'm just detached from all of these things and everything belongs to Krishna? क्या आप बस नाटक करेंगे कि मैं किसी चीज़ से आसक्त नहीं हूँ, सभी कुछ कृष्ण का है मेरा. Krishna is not going to buy that. कृष्णा ये सब चीज़ से मूर्ख नहीं बनेंगे. Because he knows better than ourselves. क्योंकि वो हमसे भी बेहतर जानते हैं. But if we're honest and we say, I'm trying to get to you, but these things are blocking me. These are unwanted things, an artist and an attachment. How will I get you as long as I'm in this condition? लेकिन आप समझ पाते हैं कि कृष्णा उससे कहते हैं कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ये सारे रुकावटें हैं, मेरे जीवन में भौतिक आसक्ति है, भौतिक इच्छाएं हैं, ये सारे अनर्थ हैं जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ. So many obstacles, so many attachments, right? It's all there. But in the middle of that, are we convincing Krishna that we don't want it? Ultimately, we don't want it, and we need the strength, intelligence, understanding how to get through all of that. That's what Krishna's waiting for. तो कृष्णा उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इन सारे हमारे अंदर बहुत सारे रुकावटें हैं, बहुत सारी भौतिक आसक्तियाँ हैं, लेकिन इन सब के बीचों बीच जो हमारी इच्छा है, शक्ति है,
कि समझने के लिए कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं, कृष्णा को समझना चाहते हैं, कृष्णा तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस चीज़ को कृष्ण देख रहे हैं। Otherwise, you know, what are you, a premi bhakta already, and you're just a pure devotee saying, "Oh yes, I just want Krishna prema." और ना आप कहेंगे Right? You're just starting. "Oh, I just want Krishna prema. I don't want any other thing." आप बस आप भक्ति की शुरुआत करें, आप कहेंगे कि मैं प्रेमी भक्त हूँ, मैं बस कृष्ण को चाहता हूँ, आप इस तरह से नाटक करेंगे। That's not true. ये सत्य नहीं है, That's not honest. ये ईमानदारी Better नहीं be है। honest with Krishna. बेहतर होगा कृष्ण के साथ You ईमानदार know हो। this is my problem. You know this is my attachment. You know this is my obstacle. आपको पता है ये मेरी समस्या है, आपको पता है ये सब मेरी रुकावट है, You know this is my doubt. आपको पता है ये सब मेरी Please संदेह है। destroy it. कृपया Please इसको नष्ट force कीजिए। me कृपया मुझे जबरदस्ती कीजिए मेरे साथ, to get rid of it. ताकि मैं इससे मुक्त हो सकूं। Even we can't help ourselves, यहाँ isn't तक- it? यहाँ Many तक कि हम- times. यहाँ तक कि हम खुद की भी मदद नहीं कर Please सकते। force me, shower mercy, causeless mercy. We don't even deserve it. मुझे जबरदस्ती कीजिए, मुझे अहेतु की कृपा दीजिए, यहाँ तक कि मैं उस कृपा के लायक भी नहीं हूँ, तब भी मुझे दीजिए। That's what Krishna wants, something that's honest and heartfelt. तो ये कृष्ण आपसे चाहते हैं, ये ईमानदारी और जो हमारे हृदय से है पूरा। Just doing some poetry and beautiful prayers and speaking from the lips and sentimental, emotional. This thing is, it's not, Krishna not like that. तो बस कुछ ऐसे गीत कविता लिख के भगवान को भावपूर्ण तरीके से कुछ प्रार्थना अर्पण करके भावनाओं में बह के इस तरह से कृष्ण आश्वस्त नहीं होंगे इन सब चीज़ों से। Whatever you are saying is absolutely correct. I'm absolutely agree with you. You know what? So millions of years I am just like slaving in the lap of Maya right now. I want to get out from the Maya. Maya is completely harassing me like each and every second. Very good. That means Bhagavatam convincing I am you. burning on the fire. My So the body Yes, is yes. burning on the fire. Haribol! Haribol! That's the point. If you get mercy of the Bhagavatam, you'll realize that and get fed up and say, I have to surrender to Krishna somehow or other. That's the point. तो यही तो बात है कि कृष्ण अगर श्रीमद् भागवतम का कृपा आपको प्राप्त हो, आप समझ पाएंगे, आप खुश नहीं हैं, आप आग में जल रहे हैं, आप पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। यही इसका यही बात है, इन सब चीज़ों का यही साक्षात्कार करना हमें। There's no other answer. There's no other thing. No other solution. कोई और उत्तर नहीं, कोई और समाधान नहीं है, दूसरा समाधान। But if you're sitting saying, no, I'm happy and, you know, I have a plan and, you know, then you're just, why even try to preach to that person? तो अगर कोई कहे कि Why argue with them? मैं खुश हूँ, मेरे पास योजना है, तो क्यों उस व्यक्ति के साथ बहस करना, समय बर्बाद करना अपना? Okay, enjoy. My Gurudev used to say, okay, enjoy. मेरे गुरुदेव का कहते हैं मजा लो। You think you can enjoy? Enjoय. आप सोचते हैं आपको मजा आएगा, ठीक है, enjoy, Let's मजा see आएगा। how well it turns out for you, you know. देखते जाओ कितना अच्छा होगा ये आगे। Get your heavy lashes, your little bit of pleasure and unlimited suffering. थोड़ा सा Right. सुख और असीमित दुख मिलेगा आपको। Then weigh unlimited suffering for a few moments of pleasure, and you see if you're intelligent enough to realize this doesn't make sense. और अगर थोड़ा सा सुख असीमित दुख के मुकाबले में, तब आप देख पाएंगे, अपनी बुद्धि से देख पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता इस सुख का, It's not worth it. इसके लायक नहीं। Then we'll do something about it. तो हम इसके बारे में कुछ करेंगे। I used to think that when I was listening to my Gurudev, that a really nice way to think, am I hearing properly in the right association, is how much is my strength of wanting to not be Maya Das and want to be Krishna Das is increasing. If that want to give up Maya and surrender to Krishna is increasing, that means I'm hearing nicely in the right association. मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा परीक्षा है जो आप कर सकते हैं अपने साथ, जबकि आप सही जगह पे और सही चीज़ श्रवण कर रहे हैं सही तरीके से, कि आपकी इच्छा जो है माया दास से कृष्ण दास बनने की तरफ, या ये इच्छा शक्ति मैं कृष्ण को शरणागत करूं, माया को शरणागत ना करूं, अगर ये बढ़ रहा है तो आप जान सकते हैं आप सही जगह पर सही तरीके से श्रवण कर रहे हैं, सही That's a संगत good में। sign. ये एक अच्छा संकेत है। Because without mercy of Guru Krishna, how can you think like that you want to give up Maya and surrender to Krishna? That means it's working. अगर कृष्णा की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो तो कैसे आप माया को छोड़ने के लिए तैयार होंगे और कृष्णा की तरफ जाने के लिए तैयार होंगे? ये संभव नहीं है।
That's the इसका मतलब ये proof. काम कर रहा है, असल में ये काम कर रहा है अब। You're getting inspired and pushed and intelligent and forced, like, what am I doing with my life? This is madness. आपको प्रेरणा मिल रही है, आपको जीवन में आप ऐसा सोच रहे हैं ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये पूरा पागलपन है मेरे जीवन में, क्या हो रहा है, This is unacceptable. ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। Then we'll do something about it. तब आप उसके बारे में कुछ But सोचेंगे। usually it takes, heavy lashes because we're like an ass sometimes. लेकिन सामान्यतः हमें जो है मोटे डंडे का से समझ में आता है क्योंकि हम गधे हैं। My Gurudev said, this is so sweet. Are you tasting? And we're like, no, Gurudev. गुरुदेव कहा करते थे कितना मधुर है, लेकिन क्या आप इसका स्वाद ले पा रहे हैं? हम कहते थे नहीं, हम नहीं ले पा रहे हैं। But I remember saying, even if I could get one drop of what he's tasting, even that would be really good for me. लेकिन मुझे याद है मैं सोचा करता था कि वो जो स्वाद ले रहे हैं अगर उसका एक बूंद भी मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी वो। Now all of a sudden you're praying to get a drop of mercy. अब आप Now you have that desire अब आपकी ये इच्छा है कि आपको वो कृपा की बूंद मिले, to become like real Vaishnava. कि आप असल वैष्णव बन सकें। Wow, your desire is changing now. आपकी इच्छा बदल रही है। That's where it starts. यहाँ से शुरुआत होती है। Because we're blind, we can't see Krishna. क्योंकि हम अंधे हैं, हम कृष्ण को देख नहीं सकते, But we can see Guru. लेकिन हम गुरु को देख सकते हैं। That's Krishna. Gurudev used to say that's Krishna's trick. गुरुदेव बताते हैं ये कृष्ण का छल है। Like the hogs, they're eating the night soil, right? जैसे सुअर जो है वो रात्रि के समय विष्ठा खाते हैं And they're thinking it's amrit, और वो सोचते हैं ये अमृत है। right? And Krishna says, oh, this hog is eating this nasty thing and he thinks it's amrit, और कृष्ण सोचते हैं ये सुअर जो है ऐसा गंदा चीज खा रहा है और ये सोचता है अमृत खा रहा है। So I have to make some trick to get him some higher taste. तो मुझे इसके साथ थोड़ा छल करना होगा ताकि इसको ऊंचा स्वाद मिल सके। So then he sent Gurudev said, then he sent you Gurudev and he speak Hari-katha, Krishna-katha. मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि वो फिर गुरुदेव को भेजते हैं जीवन में और वो हरि कथा कृष्ण कथा कहते हैं। Now he's putting some sweet milk, into your filthy thing, तो अब जो है कृष्ण कुछ मीठा दूध दे रहे हैं आपके वो गंदी चीज में। So he has to little trick you, तो वो थोड़ा छल करते हैं हमारे साथ। Just like when we first came to Krishna consciousness with chanting Hare Krishna Maha Mantra, it's like so sweet, so interesting, right? Krishna helping, reciprocating, attracting us, isn't it? जैसे शुरुआत में हम कृष्ण भावनामृत में आए, हम जप करने लगे कृष्ण भावनामृत, जप करते समय हमें बहुत अच्छा स्वाद मिलने लगा। जप में हमें शुरू में इस तरह बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि कृष्ण हमें कुछ कृपा दे रहे थे शुरुआत में। So Krishna is attracting us through holy name, it's said in the Shastra, and through Guru Sadhu Vaishnavas. तो शास्त्र में बताया गया है कृष्ण हमें आकर्षित कर रहे हैं भगवान के दिव्य नाम से और साधु गुरु वैष्णव के संग से। And by the nice results of practicing devotional service, that results in some peace of mind and happiness. This is a way of attracting us to this path. और जब ये भक्ति मार्ग का अभ्यास करने से हमारा मन जब शांत होता है, इसका जब हम फल देख पाते हैं तो वो हमारी मदद करता है भक्ति के पद में उन्नति करने के लिए, वो हमें प्रेरणा देता है। And then if we won't be attracted, then Maya is behind us with the heavy stick. और अगर हम उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो माया तैयार है पीछे से डंडा लेकर। So what's nicer, being attracted or getting hit from behind by Maya? तो क्या ज़्यादा अच्छा है, आप कृष्णा सामने से आकर्षित करें या पीछे माया डंडे से मारे? What do you think is better? आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा बेहतर है? So it's going on somehow. Sometimes we're attracted, sometimes we're getting whacked, isn't it? तो ये दोनों एक साथ काम कर रहा है, कभी कभी हमें आकर्षित हो रहे हैं और कभी कभी हमें झटका लग रहा है पीछे से। Move along like an ass, right? गधे की तरह आगे बढ़ रहे हैं। In this way, Krishna is helping us. इस तरह से कृष्ण हमारी मदद कर रहे Directly, हैं, indirectly. सीधे तरीके से या दूसरे तरीके से। All right. So now Krishna's, you got the point. That means you got mercy. आप बात समझ गए, इसका मतलब आपको कृपा मिला है। Prabhupada said, that's why Prabhupada said, if you're getting fed up and exhausted and frustrated, disappointed, this is very good for spiritual life. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं अगर आप पूरी तरह हताश हैं, निराश हैं, पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके हैं तो ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा फायदा है। That's why this COVID and all this restriction, all this madness, it's so disturbing, isn't it? तो ये जो कोविड
का जो परिस्थिति है, ये सभी जगह पे रोक टोक है, ये पूरी तरह जो पागलपन है, ये बहुत परेशानी वाली स्थिति है। But for spiritual life, it's very good लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, because it makes you want to get out of here. क्योंकि ये आपको इच्छा दिलाता है कि आप यहाँ से बाहर निकलें। It's so hellish situation. ये बहुत नरकीय स्थिति है यहाँ। But if we're enjoying, then we're like, oh, we're enjoying, we're having fun, you know. लेकिन अगर हम पूरे आनंद में हैं, मजे में हैं, तो कहते हैं हम तो आनंद में हैं, मजे में हैं। That's why Queen Kunti said, let the difficulties come again and again. इसलिए कुंती अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि जो परेशानियां हैं उसको बार बार आने दीजिए जीवन में। I don't mind, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, because that's the time I'm really praying to you, Krishna. क्योंकि ये वो समय है जब मैं कृष्ण आपसे प्रार्थना करती हूँ। I'm crying to you, Krishna. You're my only shelter, my only protection. मैं कृष्ण के लिए रोती हूँ, वो मेरे एकमात्र रक्षण करता है, वो मेरे एकमात्र आश्रय हैं। And then she's feeling Krishna's reciprocation and protection. और उनको कृष्ण का प्रतिफल और कृष्ण का रक्षण भी महसूस होता है। So then she's thinking, even if death came right now, let it come, because I'm thinking about Krishna. Then I'll go back to Godhead. तो वो कहती हैं अगर इस क्षण मुझे मृत्यु आ जाए तो सबसे सही समय है, क्योंकि इस क्षण मैं कृष्ण का स्मरण कर रही हूँ, तो मैं भगवत धाम वापस चली जाऊँगी कृष्ण के पास। But we want easygoing life. We want to enjoy, right? We don't want any stress. Don't want to be bothered, right? So we're not really crying to Krishna. तो हमें बहुत आसानी से चलने वाला जीवन चाहिए, कोई समस्या नहीं चाहिए, जीवन में कोई तनाव नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कृष्ण को ढूंढ नहीं रहे हैं। We're just relaxing, chilling out. हम बस रिलैक्स कर रहे हैं और बस ठंडे तरीके से बैठे हुए हैं। Sometimes we need a chakra chasing us. कभी कभी चाहिए कि हमारे पीछे कोई चक्र घूमते हुए, Like Durvasa Muni. जैसे दुर्वासा मुनि के पीछे आया, Right? He had chakra chasing him. He couldn't go anywhere, you know. उनके पीछे चक्र दौड़ रहा था, वो कहीं बचकर जा नहीं पा रहे थे। It was always right behind him, burning him. You know, he running through all the 3 universes looking for someone to get rid of that chakra. You know. वो तीनों लोकों में दौड़ रहे थे, चक्र उनके पीछे पीछे हमेशा दौड़ता रहता था। Exactly. We need a chakra chasing us. That's very motivating. हमें चाहिए हमारे पीछे कोई चक्र घूमे, ये बहुत हमें उत्साह, हमें बहुत उद्देश्य हमें देगा। And it said while he's running away from that chakra, he's becoming very humble and very intelligent. ऐसा कहते हैं जब चक्र उनके पीछे भाग रहा था, वो आगे आगे भाग रहे थे, तो धीरे धीरे बुद्धिमान होते जा रहे थे और थोड़े विनम्र भी होने लगे। So sometimes we need like that. तो कभी कभी हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है। That's also motivating. ये भी हमें प्रेरणा देता है। We need some motivation. हमें कुछ प्रेरणा चाहिए, Otherwise we're doing go slow. वरना हम जो है धीरे जाने लगते हैं। I heard about that in India one time, you know. मैंने पहली बार ये सुना भारत में। We were all stuck in the traffic you know, for a long time. I said, what's going on, you know? They said, oh, they're on strike today, you know. हम जो है ट्रैफिक में काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए थे, जब मैं भारत आया यहाँ पर आ रहे थे, तो मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा बताया यहाँ कोई जो है हड़ताल पे बैठे हैं। So I said, then why they came to work, you know? तो फिर वो कहते हैं वो काम पे क्यों आए थे फिर? No, they came to work because they don't want to get fired, you know. वो काम पे इसलिए आए क्योंकि वो काम से निकलना नहीं चाहते थे। But they're वो निकालना moving नौकरी से निकालना really चाहते थे। slow. लेकिन वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। So they're working, they're at work, but they're going really slow. तो वो काम पे आए हैं, लेकिन वो काम इतना धीरे धीरे कर रहे हैं। It's like a go slow. इसको कहते हैं धीरे धीरे। So we're doing devotional service, तो हम भक्ति कर रहे हैं, right? But we're moving real slow. लेकिन हम बहुत We're धीरे doing धीरे a go slow. हम ये go slow कर I'm रहे हैं। going. I went to class. I chanted. I did everything. मैं क्लास में आया, मैंने जब किया, मैं सब कुछ कर लिया मैंने, But not heartily, लेकिन हृदय not से नहीं, seriously. गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। So we're doing a go slow. तो ये हम ये go slow धीरे से जाने का कर रहे हैं। So Krishna, he has to send a chakra. तो कृष्णा जो है ना एक चक्र भेजते Yeah. हैं। There's woo. Then we stop moving, right? जो है चलने लगते हैं। That's also mercy, ये भी कृपा है, isn't it? है कि नहीं? We need it. हमें जरूरत है। So Krishna is attracting on one side and chakra or heavy lashes on the back side. In this way we're going. तो कृष्ण एक तरह से आकर्षित कर रहे हैं और चक्र और पीछे से कड़ा प्रहार हमें मिल रहा है, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं।
Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki Samaveda Bhakta Binda ki Gaura Premanande Hare Krishna. Thank you very much. Srila Gurudev ki Srila Prabhupada Srila Gurudev. Hear some philosophy and take some prasadam. What's the problem? Chant Hare Krishna. थोड़ा शास्त्र सुनो, कुछ प्रसाद लो, हरे कृष्ण जप करो, क्या समस्या है? That's an easygoing life. यही तो आसान जीवन है. Prabhupada said, simple living, high thinking. बात कहते हैं आसान जीवन और ऊंचा विचार. He didn't say complicated thinking and what is it? Complicated thinking and complicated living and no thinking. Yeah, no thinking, complicated living. और कहते हैं जटिल जीवन और ऊंचा विचार नहीं, नीचा विचार. Not thinking, complicated living versus what is it? Higher thinking. Simple living, and high simple thinking. living. सादा जीवन उच्च विचार के बजाय हम जो है जटिल जीवन और नीचा विचार रखते हैं. Sometimes people say, I don't know a life of peace. It's very, very foreign to me. I don't know if I can get used to that. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं जीवन में शांति का मतलब क्या होता है. मुझे बहुत विदेशी जैसा लगता है ये सुनने में. My life is always chaos and crisis situation. Right? मेरे जीवन में हमेशा उथल-पुथल और हमेशा दुखमय. So what will I do with all of that peace and happiness? I don't know what I'll do with that. तो इतने सारे सुख और शांति का करूँगा क्या मैं अपने जीवन में? मुझे पता नहीं. Figure it out. भूल जाओ. Hari